Nasir Mu'in. So inshallah we're going to start Hajj discussion for today. And first, alhamdulillah, congratulations, you all of this. English is better, Urdu is better. Which language you prefer? I think Urdu is better. I think most of you understand Urdu. Then Maulana can speak English, so you can understand both languages. I have Urdu is better. So decide loud, Sabah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. But I speak very easy Urdu, so you understand. If you have any issue, you can ask me, so I can convert into English, inshallah. So Hajj एक बेहतरीन इबादत है जो तमाम इबादतों को एक साथ अपने अंदर लिए हुए। ये ऐसी इबादत है जिसमें आप फाइनेंशियल, फ़िज़िकल, स्पिरिचुअल और सोशल चारों किस्म की इबादत एक साथ करते हैं। इसका मफ़हूम है कि आपको चारों चीज़ों पर एक साथ फोकस करना है, कि जब इंसान एक इबादत करता है तो एक चीज़ पर फोकस करता है। स्पिरिचुअल इबादत होती है तो खाली स्पिरिचुअल फोकस करता है, फाइनेंशियल होती है तो फाइनेंशियल फोकस करता है, जिस किस्म की इबादत। लेकिन क्योंकि हज एक कंप्लीट इबादत है, इसलिए इसमें हर किस्म का एस्पेक्ट को आपको मैनेज करना है और सबको मेंटेन करना है ताकि आपका हज परफेक्ट हो सके। ये इसकी पहली जो है वो रिक्वायरमेंट है। इसीलिए हज की इस्तिताअत में ये चारों चीज़ें शामिल होती हैं। उस वक्त इंसान हज के लिए मुस्तती नहीं होता जब तक ये चारों चीज़ें आपके लिए अवेलेबल न हो जाएँ। फिज़िकली आप फिट हों, सोशली का मतलब ये कि वहाँ पर आपके लिए कोई ख़तरा ना हो, आप आराम से जा सकें, वहाँ कोई आपको मारने के लिए ना आया हो, आपको पता चल जाए मुझे किल करने के लिए। जैसे इमाम हुसैन के लिए आए थे तो फिर आपके लिए हज को उम्रे से बदलना होगा, जैसे इमाम हुसैन ने बदला था। और उसके बाद जो है फाइनेंशियल लाजमी कि आप कैपेबल हों, न सिर्फ आप बल्कि आपके बाद जो लोग रहते हैं वो कैपेबल हों। तो इंशाल्लाह उस पर डिस्कशन होगा। ये एक ऐसी इबादत है जिसको इंसान एक मरतबा वाजिब की नीयत से करता है, लेकिन मासूम ने उसको बार बार करने का हुक्म दिया। आप जितनी मरतबा करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए इसका फ़ायदा है, जो फ़ायदे आपको इंशाल्लाह बयान किए जाएंगे, जो आप ज़्यादा से ज़्यादा उससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। हज का लिटरेरी मीनिंग जो है, आप किसी जगह पर जाने की जो है वो नीयत करते हैं, जो ख़ास करके मक्का मुकर्रमा उस ख़ास अय्याम में कि जो ज़िलक़ाद और ज़िलहिज में हज की नीयत से उस जगह पहुँचने को हज कहते हैं। उसके अलावा अगर किसी और ज़माने में जाएंगे तो उस ज़माने में इसी जगह पर जाने को उम्रा कहा जाएगा। फ़र्क ये है कि जब आप इस मौके पर जाएंगे कि जो अल्लाह ने हज के लिए मुतय्यन किया है, तो उस वक्त के लिए आप हज की नीयत करेंगे, वरना उसके पहले और बाद में जाएंगे तो फिर वो आपके लिए मसला है कि इंसान जब निकल रहा है तो वो इसी नीयत से निकलेगा और सारी नीयतें अल्लाह की खातिर होगी, क़ुर्बतन इल्लल्लाह होंगी, ताकि अल्लाह ही की खातिर इस अमल को अंजाम दिया जा सके। हज के लिए जो वाजिबात हैं उनकी लिस्ट आपके पास है, बारहा उसको बताते हैं। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने हज को वाजिब ही इसलिए किया है ताकि खुदावंद आलम के ऊपर सिर्फ इंसान जो है वर्बल ईमान न रखे, बल्कि प्रैक्टिकली उसे प्रूव करे कि मैं जिस चीज़ पे ईमान रखता हूँ उसके लिए कोशा हूँ, उसके लिए मैं बाकायदा जो है वो सही कर रहा हूँ। और ये इंसान का वहाँ जाना और इस अम्र को अंजाम देना जो है वो इस बात की अलामत है कि वह अल्लाह पे मुकम्मल ईमान रखता है। इसीलिए हज के जो फ़वाइद मासूमी ने बयान किए हैं वो ये कि इंसान का ईमान हज की वजह से कवी होता है। अगर हज पे जाए उसका ईमान कवी ना हो तो इसका मतलब ये कि हज उसका मुफीद नहीं रहा, उसका ईमान में इजाफ़ा होना चाहिए हज पे जाने की वजह से। क्योंकि हज पे जब इंसान जा रहा है तो जिन चीज़ों को उसने सुना है वो अपनी आँखों से देख कर आता है, इसलिए उसके हज को खुदावंद आलम इसकी वजह से न सिर्फ कबूल करता है बल्कि उसके ईमान में इजाफ़े का सबब करार पाता है। इसलिए अल्लाह ने अपने घर पे आने को वाजिब करार दिया है और ये इंसान के लिए एक ड्यूटी है जिसको उसे अंजाम देना है। जब इंसान जा रहा है तो क्यों इसको कहा कि ईमान में इजाफ़ा होता है? क्योंकि वहाँ फ़ी आयतुम बय्यिनात मक़ाम इब्राहीम मन दख़ला कान आमिनन वलिल्लाहि अल हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला व मन कफ़रा फ़इन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन। अल्लाह ने बहुत सख्त लहजे में कहा है कि तुम नहीं आओगे तो मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम इंसानों से नहीं सारी कायनात से बेनियाज हूँ, कोई भी शय मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर तुम आओगे तो अपनी इम्पोर्टेंस को शो करोगे, अल्लाह की वहदानियत पे किसी किस्म का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इसका लास फ़इन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन, अल्लाह हर एक चीज़ से बेनियाज हो, समद है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब हज का डायरेक्ट इम्पैक्ट हम पे पड़ता है, तौहीद पे नहीं पड़ता, लेकिन तौहीद हमारे लिए। इसीलिए यहाँ जो आयत है कि इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बबरकतिन मुबारक हुदल लिल आलमीन, यहाँ से इसका आयत का पहला हिस्सा शुरू होता है जो सूरह
आल इमरान की आयत नंबर 96 से 97 है, जिसमें अल्लाह अपने घर की तारीफ़ कर रहा है कि आप मेरे घर पे जो आते हो तो ये घर मैंने रूए ज़मीन पे पहला घर बनाया, यानी इस खुश्की में जो पहली चीज़ यानी पानी में से जो खुश्की पहली उभरी वो खाने काबा की है, सेंट्रल ऑफ द अर्थ है। तो पहली चीज़ अल्लाह ने कहा कि नावला बैतन वज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बबरकतिन मुबारक, ये घर मुबारक है, यानी इंसान जब यहाँ जाता है तो अपने लिए बरकतें लेकर आता है। हुदल लिल आलमीन, ये आलमीन की हिदायत करता है, इंसान इसकी वजह से हिदायत पाता है। इसके बहुत सारे दूसरे विलायती एस्पेक्ट भी हैं, वह बारहा आप खुद में पढ़ें, लेकिन यहाँ जो मैंने अर्ज़ किया फ़ी आयतुम बय्यनात, इसमें अल्लाह की बहुत सारी निशानियाँ हैं। अगर आप हज पे जाते हैं और वहाँ जाके देखते हैं तो आपको ज़ाहिरी तौर पर खाने काबा के अंदर कोई निशानी नज़र नहीं आती। एक निशानी जो अलग से वो मकाम इब्राहीम वो बाहर पड़ी है, वो अंदर नहीं है। फ़ी आयतुम बय्यनात में उलमा ने जिस निशानी को बयान किया वो एक ही निशानी है, और वो मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब के लिए दीवार में जो दर बना था वो निशानी, उसके अलावा और कोई निशानी वहाँ नहीं है। और यही निशानी देखकर इंसान जब विलायत अली इब्न अबी तालिब का इकरार करके हज करता है तो उसका हज कबूल होता है और इंसान को अमान मिलती है। ये मन दखला काना आमिनन, ये बाज़ औक़ात उलमा कहते हैं जब वहाँ जाता है इंसान तो अगर गुनहगार भी है, क्रिमिनल भी है, जब तक वो अंदर है उसे वहाँ अरेस्ट नहीं किया जाता। लेकिन आमिनन की जो दूसरी जो है तफसीर बयान की गई कि नहीं, इस हज की वजह से खुदा उसे यहाँ नहीं हर जगह अमान देता है। तो हज की सबसे बड़ी है कि फ़जीलत में है कि हज इंसान को ज़ाहिर तौर पर जो आपने पैसा लगाया आप सोचते हैं कि आपके अकाउंट से कम हो गया, लेकिन उल्टा होता है। जैसे ज़कात की मीनिंग आपको होता है, ज़कात का मीनिंग होता है टू ग्रो, ज़कात की मीनिंग क्या होता है? टू ग्रो, बढ़ना। इसी तरह हज पे जो इंसान पैसा लगाता है वो कभी फ़कीर नहीं होता। इसका क्या है? हज पे जाने की वजह से इंसान को कभी फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। ये इसका एक सबसे बड़ा रिवॉर्ड है जो अल्लाह आपको देता है, बल्कि जो पैसा आपने लगाया है वो मिलियंस ऑफ टाइम बढ़ के आपको मिलेगा। अब हो सकता है कि आपने शेयर मार्केट में लगाया और आप आए इंतज़ार करेंगे बढ़ जाए और ना बढ़े तो कंप्लेन न कीजिएगा क्योंकि वो बढ़ने से मुराद क्या है कि ये जो आपका पैसा आपने लगाया है इसका रिवॉर्ड आपको दुनिया में मिलेगा। दुनिया में खुदा फाइनेंशियल आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, लेकिन क़यामत में इस पैसे का जो आपको रिवॉर्ड मिलना है, जज़ा मिलनी है, वो अनबिलीवेबल होगी। जो भी पैसा आपने सही तौर पर हज के लिए मसरफ़ किया है बग़ैर किसी इसराफ़ के, वो हर एक पैसा कई मिलियन गुना आपको बढ़ के मैसर आएगा। दूसरा, हज और उम्रा ये दोनों साथ होते हैं। हज तमत्तु जो आप करते हैं, उम्रा आपके गुनाहों का कफ़ारा, हज आपकी जन्नत की कुंजी है, या आपके जन्नत में जाने का ज़रिया है। दूसरा है कि इंसान जब हज पे जाता है तो ये खूबसूरत चीज़ लिखी है कि जब इंसान हज उम्र पे जाता है तो उसके गुनाह, उसके आमाल जो बुक है उससे ऐसे ही जुदा हो जाते हैं जैसे कि इंसान जो है वो सैंड पेपर से आयरन से रस्ट को हटाता है। इंसान के गुनाहों का कफ़ारा, गुनाह उसके क्लीन कर दिए जाते हैं, साफ़ कर दिए जाते हैं, वो पाक हो जाता है। और मैंने इसके लिए अर्ज़ किया था कि जिस दिन पढ़ रहा था मजलिस, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, और इमाम मोहम्मद बाकर के पास कोई आया था सवाल करने की, आप लोग जा रहे हैं इसको ध्यान रखें, ये बहुत बड़ी बात है जो मैं कह रहा हूँ। तो इमाम मोहम्मद बाकर के पास कोई शख्स आया, आने वाला का मौला मैंने गुनाह किया है, तो इमाम ने कहा कि और मेरे गुनाहों का कफ़ारा क्या होगा? तो इमाम मोहम्मद बाकर ने जवाब नहीं दिया। इमाम जाफ़र सादिक़ बैठे थे छोटे, उनके पास भेज दिया कि इनसे जाके पूछो। तो इमाम जाफ़र सादिक़ के पास आया, इमाम जाफ़र सादिक़ ने उससे पूछा नहीं क्या गुनाह, ख़ुद इमाम जाफ़र सादिक़ ने उससे गुनाह बयान करना शुरू किए। बोले पहले क्या तेने ये गुनाह किया है कि तूने रमज़ान में जो है रोज़े छोड़ दिए जानबूझ के। तो आने वाले ने कहा उससे बड़ा गुनाह किया है। तो ये इमाम ने उससे कहा कि यार तूने रमज़ान में खुदा का एडल्ट्री ज़िना अंजाम दिया है, तो कहा मौला उससे भी बड़ा गुनाह किया है। तो इमाम ने तीसरा गुनाह गुमराया, क्या तेने किसी मोमिन को नाहक कत्ल किया है, जो सबसे बड़ा गुनाह है, जिसकी सज़ा हमेशा जहन्नम है। कोई इंसान मुताम्मिदन किसी मोमिन को कत्ल कर दे और तौबा न करे तो हमेशा के लिए जहन्नम। तो उसने कहा कि मेरा गुनाह इससे भी बड़ा है। अब इमाम ने गुनाह नहीं गिनाए, कहा अगर ऐसा शख्स गुनहगार है तो वह हज या उम्रे की नीयत से मक्का जाए। हज या उम्रे की नीयत से कहाँ जाए? मक्का जाए, और मक्का जाने के बाद खाने काबा का पर्दा ग़िलाफ़ या दीवार पकड़कर या वहाँ करीब जाकर वो दिल से तौबा करे कि दोबारा इस गुनाह को नहीं करेगा। और उसके बाद अगर वो अली इब्न अबी तालिब की विलायत का कायल है तो बख्शा जाएगा, और अली को नहीं मानता है तो ये तौबा उसके काम नहीं आएगी।
तो इमाम ने ये जो गुनाह का कफ़ारा है, इसमें आप जाते हैं, एक तो ये कि इंसान काबे को देखता है, जब तक देखता रहता है उसके गुनाह माफ़ होते हैं। जब तक वो काबे को जो है वो सिर्फ तवाफ़ करता है या वहाँ नमाज़ पढ़ता है, हर चीज़ के गुनाहों का कफ़ारा है और उसके स्टेटस को बढ़ाती है, उसके लिए बाइस खैर बनती है। तो बहरहाल जब आप जाएँ तो इस चीज़ को याद रखें, मासूम का एक वाक़या मैंने आपको पेश किया ताकि इंसान के लिए बाइस खैर हो बढ़ गए। ये एक किस्म का जिहाद है, मैंने कहा फाइनेंशियल जिहाद है, फ़िज़िकल जिहाद है, स्पिरिचुअल जिहाद है, हर किस्म का, क्योंकि इसमें आपको एक्टिव रहना है, वहाँ पर पैसिव नहीं रहना। जिहाद का मफ़हूम यही है कि जैसे सोल्जर सो जाता है तो जान का ख़तरा हो जाता है, आप ढीले पड़ गए तो आपके हज को ख़तरा हो जाएगा तो वहाँ ढीले नहीं पड़ना है, आपको अपनी सेहत को, अपनी जो है एनर्जी को, अपने तमाम पावर को मेंटेन करना है, क्योंकि वो पावर मेंटेन नहीं की तो आप इस हज के उमूर का अंजाम फिज़िकली बहुत आपकी एनर्जी वहाँ दरकार होती है, फुल एनर्जी से आपको जाना है। इसलिए एनर्जी सेव करें, प्रैक्टिस करें, वॉक करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वहाँ पे आपको वॉक का प्रॉब्लम ना हो। जितने लोग आपको ले जा रहे हैं वो आपको रिकमेंड करेंगे कि एवरीडे से आपका वॉक शुरू कर दें, आपके नेबरहुड में वॉक करें, नहीं आए तो यहाँ के वॉक करें, मैं आपके साथ करूँगा, इंशाल्लाह हेल्प दूँगा ताकि आपके पैरों में वहाँ दर्द ना हो, आप अपने लिए फ़िज़िकली फ़िट हो सकें। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि इंसान के लिए, इंसान हज पे जाता है, मैंने किया कि हर चीज़ जो एक्सपेंस करता है वो सब उसके लिए बाकायदा वापस पलट गया। काबा, हज और उम्रा जो है इंसान के गुनाहों का, यानी इंसान का हज पर जाना और उम्रा अंजाम देना उसके गुनाहों का कफ़ारा है। इंसान अगर हज करता है तो वो फ़िज़िकली फ़िट होता है। ये देखिए आप, जो अल्लाह उसकी बीमारियों से उसे निजात देता है और फ़िज़िकली फ़िट होता है। खुदा इसकी वजह से उसको फ़िज़िकल वेलबींग अता करता है, उम्र बढ़ती है, उसकी सेहत बढ़ती है, उसकी सलामती बढ़ती है, खुदा उसकी वजह से। बल्कि ये चीज़ हम मांगें जाके, आप जो दुआएं मांगते हैं उसमें खुदा आपको सेहत और सलामती के साथ तुले उम्र अता करे, ये दुआ वहाँ जाके ख़ास करके मांगें, क्योंकि रिवॉर्ड है जो अल्लाह ने हज के बेनिफिट में अपने चाहने वालों के लिए रखा है। अल्लाह हज की वजह से इंसान के रिस्क को बढ़ाता है। और एक लो याद रखें कि अल्लाह अगर रिस्क को बढ़ाएगा, उम्र न बढ़ाए तो रिस्क का बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जो चीज़ रिस्क को बढ़ाती है वो उम्र को बढ़ाती है, जो उम्र को बढ़ाती है वो रिस्क को बढ़ाती है। दोनों चीज़ साथ बढ़ती हैं, इंसान के लिए बाइस से खैर बनती है। मैंने अर्ज़ किया कि हज का एक फ़ायदा उसके ईमान का इस्तेहकाम है, उसका ईमान मुस्तहकम। दो ही जगह जाके इंसान का ईमान सेव होता है, एक हज पे जाके, एक ज़ियारत इमाम हुसैन को जाके। ये दोनों जगहों के रिवॉर्ड सेम लिखें ताकि इंसान जब वहाँ जाएगा तो उसका ईमान सेव होगा। लेकिन हाँ, बाज़ औक़ात इंसान अगर प्रिपेयर होकर न जाए तो ईमान खो देता है, तो वो एक अलग मंजिल, खैर वक्त उसमें लग जाएगा कभी। इसके बाद यही कि इंसान जब वहाँ जाता है तो खुदा उसके तमाम किस्म के जो है वो पॉवर्टी को, यानी अब इसमें बहुत सारी चीज़ें जो पॉवर्टी से मुराद जो है इंसान का, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे किसी किस्म की पॉवर्टी, यानी फ़ख्र, हर किस्म का फ़ख्र होता है। तो हर किस्म के फ़ख्र से खुदा उसे नजात अता करेगा। दूसरा ये कि इंसान इसकी वजह से क़यामत की तमाम होलनाकी से महफूज रहेगा। और ये वैसे भी आपको देखिए एक बेस्ट प्रैक्टिस है, क़यामत में तो पूरी आदम से लगा के जो है ख़ातम इमाम ज़माना तक की पब्लिक होगी। इतने पब्लिक में आपको कितना डर लगेगा, तो आप कम से कम आप जाके 1 मिलियन 2 मिलियन में आपको आदत हो जाए। लेकिन आप तो वैसे भी जो है करबला बार बार जाते हैं, वॉक करके आएँ, तो आपको वैसे भी डर लगने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब आदमी पब्लिक में चला जाता है तो वैसे भी उसे खौफ से अमान होती है। इंसान ये क़यामत और उसकी आखिरत की या तमाम ज़िंदगी की मुश्किलात को हल करने का ज़रिया है। एक हज काफ़ी नहीं है, ये मासूमीन ने कहा है। पहला हज वाजिब है, उसके बाद मुस्तहब हो जाता है, इंसान मुस्तहब हज को बार बार करता रहे। कोई शख्स ये शायद इसमें है, हाँ, ये जो आज प्रोपोगेट करते हैं भाई एक बार हज कर लिए काफ़ी है, बाकी अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखो, गरीबों को और जो है पैसा दो, पढ़ाओ। इमाम ने कहा ये कहने वाले झूठे हैं। इमाम ने कहा ये जो कह रहे हैं ये झूठे हैं, लायर्स हैं, ऐसा नहीं है। आप वो एक अलग सिस्टम है, ये अलग सिस्टम है। आप बिल्कुल गरीबों की मदद करें, ब्लड रिलेटिव्स का ख्याल रखें, लेकिन हज के एक्सपेंस पे नहीं कर सकते हैं। तो इसका एक नुक्ता दूसरा याद रखें कि जिस तरह हज के एक्सपेंस को रोक कर दूसरे एक्सपेंस में डाइवर्ट करने को इमाम ने झूठा कहा है, इसलिए आज़ादारी के एक्सपेंस को रोक कर दूसरी जगह लगाने को भी झूठा कहा है। इन सब की एक यहाँ बहरहाल भी एक इम्पॉर्टेंट बहस बैत अतीक़ है, ये बैतुल हराम इसके नाम है, इसके ऊपर किसी की इजारेदारी नहीं है। घर अल्लाह का घर है और अल्लाह के बंदे इसके मालिक हैं। इसीलिए आपको ये सबसे बड़ा प्रिविलेज दिया गया है कि आप वहाँ जाते हैं आपकी नमाज़ पूरी होती है। अगर आपका घर नहीं होता तो आपकी नमाज़ पूरी नहीं होती। आपका घर है, आप उसके खुद मालिक हैं। मालिक से बात मिल्कियत नहीं है, लेकिन आपका अपना घर है। सऊदी अरब ने कंट्रोल कर रखा है, वो अलग बात है, लेकिन जिस तरह आप
अहमदाबाद जाके अपने घर पे पूरी नमाज़ पढ़ते हैं, इसलिए काबा में जाके पूरी नमाज़ पढ़ते हैं। काबा में पूरी नमाज़ पढ़ने का एक फ़लसफ़ा ये भी है कि ये किसी और का घर नहीं है, बेहद मोहतरम घर है, इसमें जाने के ख़ास आदाब हैं। इंसान करता है, इस घर को इंसान जब देखता है तो सब चीज़ें याद रखे कि ये अल्लाह का पहला घर है जो अल्लाह ने अपनी तौहीद की निशानी के ऊपर बनाया है। जनाब इब्राहिम ने इसकी दीवारों को बुलंद किया, जनाब इब्राहिम इसके मेमार हैं, जनाब इस्माइल से इसकी यादें जुड़ी हैं कि मिना में अब जाते हैं तो वहाँ जनाब इस्माइल का सेक्रीफाइस वहाँ पर मौजूद है। जनाब आदम और हवा का मिलन और तौबा का मकाम वहीं है, जबल रहमा है वहाँ पर। जनाब इब्राहिम का जो है इम्तहान था, वो इम्तहान जनाब इब्राहिम ने दिया है। सेक्रीफाइस के साथ साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा की जाए विलादत है, वहीं पर मोहम्मद मुस्तफ़ा ने ज़िंदगी गुजारी है। और सबसे बड़ी मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब की जाए विलादत है। तो ये मक्का और काबा और इससे रिलेटेड सारी चीज़ें जो आप वहाँ देखेंगे इंशाल्लाह, तो आपके लिए बाइस खैर। कंडीशन ऑफ द हज के लिए कि इंसान सबसे पहले यही है कि प्यूबर्टी की एज हो, जो बालिग हैं उनके लिए हज वाजिब है, जो बालिग नहीं है वो मुस्तहब हज करते हैं, जब बालिग हो जाएंगे दोबारा करेंगे। लोग बच्चों को ले जाते हैं, बच्चों के हज का एक अलग अहकाम है, आपके साथ तो जा नहीं जाते, तो उसके लिए अलग से सेशन है। दूसरा एक इंसान साउंड ऑफ द माइंड, यानी किसी किस्म का जो है वो उसके साथ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। अब इसके भी अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं बहुत सारे, ये एक मसला बड़ा टेढ़ा है। बहुत से लोग मेंटली फिट होते हैं, अकीदती अनफिट होते हैं, तो अकीदती अनफिट आदमी भी वहाँ पे सेव नहीं होता। बहुत से लोगों का अकीदा दीन के बारे में गलत होता है, तो वो हो सकता है कि बहुत स्मार्ट हों, लेकिन अकीदती एतबार से वो डामाडोल हैं, तो वहाँ हज नहीं होता। एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाएगा। बहुत से लोग कायल हैं कि क्योंकि इमाम हुसैन के कत्ल के बाद अब सफ़ेद कपड़े नहीं पहन जा सकते, तो काले लिबास में जो है वहाँ हज करना पसंद करते हैं। तो ये मेंटली फिट हैं लेकिन अकीदती अनफिट हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि एहराम भी काला होना चाहिए। बहुत से लोग अकीदा ये एक है ग्रुप पूरा आपको बताए। तो इसका मतलब क्या, ये यहाँ पे वेलबींग से मुराद है मेंटली साउंड होना, यानी इसका अक्ल जो आकिल होना। आकिल से मुराद यानी कि इंसान अपनी अक्ल को इतना बढ़ा ले कि वो महाराजे की अक्ल के ओवर चला जाए, मासूमीन के फरामीन के ऊपर अपनी रूलिंग करना लगे, तो भी बेअक्ल है, उसकी अक्ल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इस्तात आप देख रहे हैं, आप पढ़े हुए, आपने बारहा देखा है, आप माशाल्लाह सब मुस्तती हैं। ख्याल रखें कि जो भी चीज़ आपने यहाँ पर की है उस इस्तात को अपनी जो है बाकी रखें। इस्तात के बारे में बहुत सारे सवाल हैं, सैकड़ों सवाल हैं और सैकड़ों उसके जवाब हैं। हर इंसान की अपनी इस्तात कॉन्ट्रोडिक्ट हो सकती है और उसको अलग अलग एतबार से डील किया। आयतुल्लाह सिस्तानी इस मामले में बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं और वो हर इस्तात को चाहते हैं कि आप कवर करें, और अगर लेकिन दूसरी तरफ वो हज की इंपॉर्टेंस को भी ख्याल रखते हैं, और आपकी इस्तात इंटरप्ट होती है तो वो चाहते हैं कि इसको जो है आप पहले मैनेज करें। इसे एक सवाल मैं आपके खुद में पेश करता हूँ, आपको समझ आएगा। इस्तात की बहुत वाइड रेंज है, ये कम से कम 100 से ज़्यादा सवाल खाली इस्तात पे हैं जो लोगों ने पूछे हैं और आयतुल्लाह सिस्तानी उसके जवाब दिया। एक सवाल किया कि मेरा हज इस साल मेरे ऊपर वाजिब है, मेरे पास पैसा आ गया, रास्ता खुला है, मेरा नाम भी निकल गया, लेकिन मेरा एग्ज़ाम भी उसी दौरान, तो मैं एग्ज़ाम दूंगा या हज पे जाऊंगा? तो आयतुल्लाह सिस्तानी का जवाब वो सिंपल था कि अगर तुम अपने एग्ज़ाम को पोस्टपोन करके हज पे जा सकते हो तो बेटर ये है कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दो, हज पे चले जाओ। लेकिन अगर ये होता है कि तुम्हारे एग्ज़ाम की वजह से इतना हर्ज होता है कि तुम्हारी पूरी लाइफ उसके ऊपर जो है, तुम्हारे भाई एक बार मेडिकल एग्जाम में एक बार नहीं बढ़ पाया, आपको पूरा 5 साल की आपकी लाइफ ख़राब कर दी, आगे डॉक्टर बन ही नहीं पाएंगे, तो फिर आयतुल्लाह सिस्तानी कहते हैं फिर अपना एग्ज़ाम दे दो, हज फिर नेक्स्ट टाइम पे करना। तो वो इस्तात इंसान खुद अपनी तय करता है, ये मकसद कहना है। इस्तात में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इंसान की अपनी खुद की हार्डशिप पे डिपेंड होती हैं। तो इस्तात पैसे की है, इसकी है, उसकी, तो उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो इशूज़ होते हैं जिसके ऊपर इंसान डिपेंड कर सकता है। यहाँ ज़रा सा जब जाए इंसान सदका दे, विल प्रिपेयर कर, विल के लिए इंशाल्लाह आपके बताया बहुत सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल उसमें न डालें। मैंने आपको 4-5 चीज़ें बताई, इंशाल्लाह मैं लिख के दे दूँगा मौलाना के साथ बैठ कर इंशाल्लाह। सबसे पहले किसी का देवा हो तो भी लिख दें। सबसे पहले विल में ये लिखा जाता है किसी की अमानत है, किसी का कर्ज़ है, वो सबसे टॉप पे लिखा जाता है। अल्लाह का कर्ज़ उसके बाद लिखा जाता है, आपके क़ज़ा नमाज़ें रोज़े लिख दें। उसके बाद अगर आपको अपनी विल सिंपल रखनी है तो कह दें मेरे प्रॉपर्टी इस्लामिक शरीयत के एतबार से बचेगी, फिर आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, शरीयत खुद जानती है कैसे बटेगी, आपके बाद जो कानून है शरीयत का उससे बढ़ जाएगी। चौथे नंबर पे आपको लिखना होता है कि जब आपको ये एहसास हो कि नहीं मुझे अपने विल में से किसी को एक्स्ट्रा देना है, तो फिर आपको मेंशन करना है। जैसे आप मेरे नाम कुछ करना चाहें तो फिर आपसे अलग से लिखना पड़ेगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली मुहम्मद वाले मुहम्मद। हाँ, तो वो उसके लिए, क्योंकि मैं तो इनहेरिट नहीं करता डायरेक्ट आपसे, इसलिए खैर
हमारे उस्ताद कहते हैं कि आप 20 मिनट सीरियस सुन रहे हो तो उनको हंसा दें, वरना फिर उनके समझ में कोई बात आएगी नहीं। सलवात पढ़ दें, अल्लाहुम्मा सल्ली मुहम्मद व आले मुहम्मद, नियत क़ुर्बतन लिल्लाह। अब ये सबसे सख्त मसला है, इसको देखिए, इसी के लिए आपको ज़हमत दी। मैं सुबह से पढ़ रहा था, मैंने 5 घंटे इसको पढ़ने के लिए लगाए, और ये आपके लिए मौलाना फौजी यहाँ पे मौजूद है। मैंने कहा आलिम को कॉल किया, आपको ज़्यादा बेहतर बताएंगे। और ये मसला होता है हज की इस्तिताअत में स्टार्टिंग ऑफ हज का। अगर आयतुल्लाह सिस्तानी का फतवा ये है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि आप अरफात में 8 तारीख़ को नहीं रुकेंगे, 9 को नहीं रुकेंगे, अरफात में 10 को आप जो है मिना में नहीं जा पाएंगे, डेट चेंज हो गई है, तो इसमें आपका हज मुश्किल में है। और ये बड़ा टफ मसला है, इसको मैंने सुबह से पढ़ा और इतना मुश्किल मसला है, क्योंकि इसका रीज़न क्या है, ये आज से 100 साल पहले से मसला है। कितने साल से? 100 ईयर ओल्ड मसला ये। और 100 ईयर ओल्ड मसला होने की वजह से क्या है, उलमा जो ज़माने में जाते थे वो कहते हैं कि ये मसला ऐसा, क्यों इसे समझें, ये आपकी नीयत पे, सारा हज इस नीयत पे डिपेंड करेगा, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। मसला ये कि जब आप हज पे उस ज़माने में जाते तो सिर्फ एक ही मौका ऐसा आता था जब सऊदी अरब गवर्नमेंट चांद को मैनिपुलेट करती थी, और वो होता था कि अगर वो सैटरडे या थर्सडे को हज हो रहा है, यानी आप अरफात में जा रहे हैं, तो हज अकबर बनाने के लिए वो डेट चेंज कर देते थे। जब डेट चेंज कर देते थे तो उसका नतीजा क्या था कि शिया आलिम के नज़दीक चांद साबित नहीं होता था और सुन्नियों के चांद साबित हो जाता था। तो शिया आलिम कहते थे कि हमारे लिए हज सही नहीं है। उलमा उस ज़माने में, क्यों उस ज़माने में आदमी बहुत पहले से जाता था और बड़ी ट्रैवलिंग की बड़ी इश्यूज़ थी, सब चीज़ थी, 3 तरह से इसे डील किया। आपके लिए आसान है, लेकिन समझें हुआ क्या था और होता क्या और आइंदा क्या होगा, इसको आप समझें ताकि फिर शरीयत समझ में आए। आप आएँ कुछ सीखने के लिए तो आपके लिए काम की चीज़ है। कुछ उलमा कुर्बानी कर कर हज को बदल कर वापस आ जाते थे, हज नहीं करते थे। वो कहते थे हम हज पे वाजिब नहीं, कि रॉन्ग डेट पे तो कर ही नहीं सकते। जैसे वक्त से पहले नमाज नहीं पढ़ सकते, रमज़ान से पहले आप रोज़ा नहीं रख सकते रमज़ान की नीयत से, ऐसे लिए हज की तारीख़ से पहले अगर आपको वहाँ ले जा रहे हैं या बाद में ले जा रहे हैं, दोनों एतबार से आपका हज वैलिड नहीं है। आज भी इस नज़रिए को मानने वाले इराक़ के ज़्यादातर उलमा हैं, उसमें आयतुल्लाह सिस्तानी भी हैं। वो भी यही कहते हैं कि अगर हज की तारीख़ मैनिपुलेट कर दी जाए तो हज सही नहीं है। लेकिन उन्होंने हमारे आपके लिए एक बेनिफिट ये दिया है कि उन्होंने इसको एहतियात वाजिब लगा दिए। तो एहतियात वाजिब लगाने की वजह से आप दूसरे आलिम को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मसला क्या, आप फॉलो किस में कर रहे हैं, ये मसला है। अब देखिए आपको ये बताता हूँ, ये देखिए इस साल ये तारीख़ है 26 मई की, जिसमें आप वहाँ पे जाएंगे, ये चांद के कोई इम्कान ही नहीं है। अगर सऊदी अरब ने इस डेट को चांद रात मान ली तो सबसे बड़ा ख़तरा है वो। वैसे नॉर्मली मानेंगे नहीं, क्योंकि उसके लिए पॉसिबल उनके लिए नहीं है ये, क्योंकि चांद की बर्थ ही नहीं हुई है, इसलिए उनके लिए ये रिवर्स है। ये देखिए ये जो है ना, ये रिवर्स है, ये उल्टा है, ये कैलेंडर अब सही ये है, ऐसे होता है, चांद इधर से चलता है। तो चांद इसमें होगा अमेरिका में, आप अमेरिका से जा रहे हैं, लेकिन वो चांद आपके काम का नहीं है, क्योंकि आप जहाँ होते हैं चांद आपके वहाँ काम होता है। आप हैं यहाँ पे, ये है ग्रे जोन में। किस जोन में? आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़दीक ग्रे जोन का, ये ग्रीन चांद ग्रे जोन में काम नहीं आता है। और ये 100% डेट है आपके सऊदी अरब की। सऊदी अरब इसी दिन उनका कैलेंडर सेट है। अभी मौलाना फौजी से इंशाल्लाह रिक्वेस्ट करूँगा आपको ज़्यादा हाईलाइट करें, वो ज़्यादा इससे वाकिफ़ है। मैंने जो कुछ पढ़ा है 165 पेज की बुक सुबह से पढ़ी है, वो बड़ा शॉकिंग है, बड़ी डिस्कसिंग मुश्किल है। आसान उसका मसला है, आपको बता देंगे, वो आप उसको फॉलो करेंगे। लेकिन असल में ये है कि ये इस एतबार से, आयतुल्लाह सिस्तानी के एतबार से, इस साल आपकी हज की कोई भी डेट उनके अकॉर्डिंग नहीं पड़ेगी। आप एक दिन पहले होंगे अरफात में, और 3 दिन जो आप वहाँ रुकेंगे उसमें से एक दिन आप मिस करेंगे। एक दिन पहले वहाँ से निकल कर आ जाएंगे, क्योंकि वो आपको पहले ही मिना में से निकाल देंगे। तो आपके लिए जो सेफ है, अब आपके लिए क्या चीज़ होती है, जितने अरकान हज हैं उसमें से जो चीज़ आपकी डिस्टर्ब होती है वो 2 चीज़ें, एक अरफात में रुकना, एक मिना में एक दिन कम रुकना। तो वुकूफ़ आपका, इसको कहते हैं वुकूफ़ को जो है आपके
मैनिपुलेट कर दिया गया, आपके वकूफ़ को जो है वो डिस्टर्ब कर दिया गया सऊदी अरब गवर्नमेंट ने अपने कानून के एतबार से, क्योंकि उन्होंने अपना कैलेंडर सेट कर दिया है, इसलिए आप उस वकूफ़ को ऑन टाइम नहीं कर पाएंगे। अच्छी चीज़ ये है कि ये अगर आपको वहाँ पता चलता जाके तो लास्ट मोमेंट पे फिर आपको चेंज करनी पड़ती है। अभी आपको ऑलरेडी पता है आज के दौर में जो उन लोगों ने कैलेंडर बनाया वो फिक्स है, इतना इतना का कैलेंडर है सऊदी अरब का, इवन दो वो लास्ट टाइम पे डिक्लेयर करें, लेकिन वो डिक्लेयर यही करेंगे जो यहाँ है, ये जो आपको बता रहा हूँ ना, इसके अलावा कोई चेंज होने वाला नहीं है। एग्जैक्टली यही होगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके नज़दीक बर्थ यहाँ हो गई है तो चांद यहाँ 100% है, इसलिए ये डेट चेंज नहीं होगी। यानी 27 को चांद रात है और 28 तारीख को पहली तारीख होगी, जो ऑलरेडी हमारे कैलेंडर में भी यही डेट डाल रखी है हम लोगों ने, ये हमारे भी यही डेट पड़ी हुई है, इसी डेट के बाद हमारा कैलेंडर भी। लेकिन क्योंकि आप सऊदी अरब में, इसलिए आपकी डेट वहाँ पर मैच नहीं होगी, तो ऐसे में आपको तकलीद बदलनी पड़ेगी। लेकिन तकलीद किस में बदलेंगे, ये मसला है। तो मैंने पूछा, ये देखिए ये भी एक मसला बड़ा टेढ़ा है, इसको सुनिए। अगर आप में से कोई आदमी आयतुल्लाह खामनाई की तकलीद में, तो उसको तकलीद बदलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई भी नहीं है, हमारे तो सब आयतुल्लाह सिस्तानी वाले। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका रीज़न ये कि ऑलरेडी आप ग्रे जोन में, ग्रे जोन का चांद आयतुल्लाह सिस्तानी आयतुल्लाह खामनाई के नज़दीक एक्सेप्टेबल है। ये चांद जो यहाँ हुआ है इसकी रेंज यहाँ तक है उनके यहाँ, इसलिए आप उनकी अगर तकलीद में, तो आपको आपकी सारी डेट्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर पढ़ रही हैं, आप ऑन टाइम हज कर रहे हैं। लेकिन आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़दीक ऑन टाइम हज आप नहीं कर रहे हैं। जब नहीं कर रहे हैं तो आपको तकलीद, अब तकलीद बदलने के लिए जो रीज़न दिए गए वो रीज़न इराक़ के उलमा उसे तस्लीम नहीं करते। उन्होंने छूट दी है कि आप जाके दूसरे आलिम को फॉलो करें, अपना हज कर लें, क्योंकि हज करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कर सकते कि आपको हज से रोक दें, हज तो फिर बंद हो जाएगा, मुश्किल होगी। इसलिए जी वही मैं आपको, असमें क्या, आप तो खाली उस एक लाइन को फॉलो कर रहे हैं ना। मैं आपको बता रहा हूँ पीछे जाकर देखिए हुआ क्या है। आप जब नियत करेंगे, आपकी नियत में होना क्या चाहिए। आप जब फॉलो करें, मैं दूसरे आयतुल्लाह को फॉलो कर रहा हूँ, तो फॉलो करने में यही बता रहा हूँ कि आप फॉलो क्या, किस बात। अगर आप आयतुल्लाह खामनाई के फॉलोवर हैं तो आपको कहीं जाना ही नहीं है, वो ऑलरेडी वैसे भी इजाज़त दे रहे हैं, ऐसे भी इनका चांद भी साबित है। यानी वो कहते हैं कि ये चांद एक दिन पहले भी होता तो भी आप कर सकते हैं हज, और चांद अगर यहाँ नहीं हुआ है तो भी आप हज कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने एहतियात, ये जो आपका सवाल है ना, इस सवाल को मैंने पूछा था अभी मौलाना जाफ़र बेंगलोरी से। मैंने कहा ये तो एहतियात वाजिब तो मेरे लिए, आपके लिए ना, आयतुल्लाह सिस्तानी के लिए थोड़ी है। आयतुल्लाह सिस्तानी किसी की तकलीद नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उनके लिए हज का मसला क्या होगा, ये सवाल किया था मैंने उनसे। उन्होंने कहा मैं पूछ के बताऊँगा, मैं मौलाना से पूछूंगा, आप बताइए। असमें ये मसला बड़ा टेढ़ा है, इतना आसान नहीं है। 150 पेज मैंने सुबह से पढ़े, तो इतना इसमें मसला बड़ा टेढ़ा इसलिए कि ये तो एक दिन का फ़र्क है, बाज़ औक़ात इससे ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। आप उसकी दलील मैं आपको देता हूँ। देखिए हमारे यहाँ ये जो है, इसको शायद मैंने उस पर लगाया नहीं, वो क्या लगाया, आगे आएगा शायद। ये उनका खुद फतवा है एहतियात वाजिब। तो जैसे इस मरतबा ईद के दिन आप जब ईद पे गए, हम लोगों ने जो ईद की थी ना, ईद उस वक्त ये थी कि हम कोई भी उस ईद के कायल नहीं थे, ना आयतुल्लाह खामनाई थे, ना आयतुल्लाह सिस्तानी थे, कोई भी उस तरह के ईद के कायल नहीं थे। लेकिन सऊदी अरब ने ईद उल फित्र उस ज़माने में की थी। तो सवाल है कि हम किस चीज़ में तकलीद करते हैं। तो तकलीद करने के लिए अगर आप तकलीद बदलते हैं, सुनो गौर से, तकलीद अगर आप बदल देते हैं पूरी, तो आपके मनासिक के हज पूरे के पूरे बदल जाते हैं। हाँ ये हाँ नहीं, वो इसीलिए को समझाओ तो आप, क्योंकि नहीं मैं तनवा आपको बता रहा हूँ, समझाए। नहीं मैं डीप में मैं आपको आप जितना सिंपल करेंगे ना, जितना ही लोगों को ज़्यादा समझ पड़ेगी। तो नहीं मैं आपकी सब चीज़ समझ रहा हूँ, लेकिन ये जितना डिटेल ज़्यादा जाएगा, इसलिए जितना सिंपल हो सके उतना समझाओ, तो ये लोगों को भी याद रहेगा, इजी रहेगा। तो आप वही नियत ही को समझा रहा हूँ। नियत जब आप करते हैं, मैं तकलीद बदल रहा हूँ, तकलीद किस चीज़ में बदल रहा हूँ ये समझना है। तकलीद किस चीज़ में बदल रहा हूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि मैं आए तो बहुत से, मैंने वो लोग यही आपको समझाया, क्योंकि मैंने यहाँ लोग जो हज करके आए उन्होंने कहा कि मैंने वहाँ जाके
एक दिन के लिए, ये सुनिए, ये आपका कलमा था, उसको मैं रिटर्न करूँ, इसलिए मैं डिटेल में गया, अपनी तरफ से डिटेल में नहीं गया। सुनिए पहले क्या हुआ। आके कहा कि मैंने एक दिन के लिए आयतुल्लाह सिस्तानी को छोड़कर आयतुल्लाह खामनाई की तकलीद कर ली। ये आपके किसी आदमी में आके आने वाले ने मुझे बताया कि मुझे वहाँ के आलिम ने जो हज के लिए ले गए थे, उन्होंने मुझे एक दिन की तकलीद जो है आयतुल्लाह खामनाई की करवाई मुझे। ये गलत है, इसीलिए मैंने आपको इतनी डिटेल में गया और आपको बताया कि ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये आपके किसी हज किए हुए आदमी ने कहा कि मुझे ये कहा गया कि आज के दिन, क्योंकि 8 ज़िलहिज्जा है और डेट सही नहीं है, इसलिए आप जो है वो आयतुल्लाह सिस्तानी की तकलीद छोड़ दें और आयतुल्लाह खामनाई की तकलीद कर लें। अब आया समझ में क्यों आपको इतनी डिटेल में गया? अगर आप जाके वहाँ पर ये तकलीद कर लें कि मैं आज आयतुल्लाह सिस्तानी की तकलीद छोड़ रहा हूँ, तो आपकी पूरी की पूरी चीज़ें गलत हो जाएंगी। आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये मसला आज फंस कहाँ गया मैं कि मैं 8 तारीख को वहाँ पर नहीं रुक रहा हूँ, 9 को रुक रहा हूँ, 10 को रुक रहा हूँ, बाद में रुक रहा हूँ। ऐसे में ये लिखा ला एहतियात वाजिब। उन्होंने कहा भाई मेरे नज़दीक तो ये हज नहीं होगा। या तो ये समझें पहले वो क्या कह रहे हैं। एहतियात वाजिब का मतलब क्या है कि वो इस बात के कायल नहीं है कि डेट चेंज की जाए। ये मर्जे की बात को सुने, क्यों मर्जा जा सकता है कि ये डिटेल, ये समझने की चीज़ है। आपको आप तकलीद करती है इसे मर्जे की, तो उसको समझना ज़रूरी है कि हम आप किस लेवल पे जाकर समझते हैं। तो उस वक्त उन्होंने आपको तो इजाज़त दी है कि आप तो करें, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। मसला उनका है कि वो बिलीव क्या करते हैं। इसके बाद जब इसकी डिटेल, तो अब उन्होंने आप क्या करेंगे, नहीं, क्योंकि डेट चेंज हुई है और डेट चेंज होने की वजह से मैं तकलीद सिर्फ इस बात की कर रहा हूँ कि इस मसले में कि अगर ये तीनों सूरत लिखी हूँ ना, देखिए मसला नंबर 772 है, इसके अंदर लिखा है कि अगर काजी वहाँ को हुक्म दे दे कि आपका जो है वो कल 1 ज़िलहिज्जा और शियों के नज़दीक वो 1 ज़िलहिज्जा ना हो, जो आपको बताया कि नहीं है, मैंने आपको प्रूफ किया कि वो इस मरतबा नहीं है। अक्सर ऐसा ही होता है कि नहीं होती, इस मरतबा भी आपकी वहाँ पर डेट नहीं है, आपको पहले से पता है। तो ऐसे में आपको तकलीद चेंज नहीं करनी है, बल्कि इस मसले में आपको ये करना है कि मैं जो हूँ, अब आयतुल्लाह सिस्तानी ने मुझे इजाज़त दी है, इसलिए हज की तारीख़ों को आयतुल्लाह खामनाई या आयतुल्लाह नासिम मकारिम शिराज़ी, ये 2 लोग हैं जो ज़िंदा हैं, जिन्होंने इजाज़त दी है कि इनकी तकलीद में जाकर इस मसले में उनकी तकलीद कर रहा हूँ। क्या सिर्फ डेट चेंज करने में, और किसी चीज़ में चेंज नहीं कर रहा हूँ, वरना पूरे मनासिक बदल जाते हैं। अगर आपने तकलीद हज के लिए तकलीद बदल ली कि मैं हज उनकी तकलीद से करूँगा, तो फिर आयतुल्लाह सिस्तानी के मनासिक के हज साइड में चले गए, फिर उनके मनासिक काम आएंगे, उनके मनासिक पूरे अलग हैं। किसको? दिल में तो नियत जब करेंगे आपको समझ में आएगा कि दिल में आपकी है क्या। दिल में आपके है क्या। तो दिल में आप जब आप वहाँ जाएंगे, जाने के बाद आप सबसे पहले तो आप वेट करेंगे कि आप 8 ज़िलहिज्जा को जब वहाँ पर पहुँचेंगे, पहुँचने के बाद जब आपको पता चलेगा कि भाई आज की तारीख बदल दी, वो 1 ज़िलहिज्जा को ऐलान कर देते हैं कि हमारा चांद कब है। वो चांद में आपको प्रेडिक्ट किया, वो चांद ऐसा कैसा रहेगा, वो ऑलरेडी उस पर रिसर्च किया, आपको बताया। क्योंकि जब वो ईद का चांद इतना पीछे मान सकते हैं, तो अमेरिका में चांद हो रहा है, उनके पहले बर्थ हो रही है, तो 100% वो 27 को होगा। लेकिन आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़दीक जो है ये चांद नहीं है, यहाँ पर आपको बताया ये यहाँ पर नहीं है। तो आपको इस मरतबा आपको इस एहतियात पे अमल करना है। क्या आप एहतियात पे अमल कर रहे हैं? आयतुल्लाह सिस्तानी के एहतियात पे अमल कर कर आप अपने हज को कंटिन्यू कर रहे हैं, वापस छोड़कर नहीं आ रहे हैं। वरना वहाँ पर बताया उल्मा पुराने ज़माने में 1 साल रुकते थे, ये हज को उम्रे में बदल कर आ जाते थे कि उनके नज़दीक डेट चेंज होने के बाद हज करना सही नहीं था। यही आयतुल्लाह सिस्तानी भी अभी मानते हैं कि डेट चेंज हो जाए तो मेरे नज़दीक हज की वैलिडिटी नहीं है, लेकिन वो अपने लिए कर सकते हैं, आपको हज से रोक नहीं सकते हैं। दूसरी रिवायतें, तो दूसरे मराजे ने कहा कि भाई हज पे नहीं जाएंगे तो शेत पे ब्लेम होगा, हर्ज है, मर्ज है, कत्ल कर दिए गए। 50 रीज़न इसके बयान किए। क्यों शरीयत में जानना क्यों ज़रूरी कि जो आप नीयत बदल रहे हैं तो आपको पता है कि इसरार क्या है, मेरे लिए मजबूरी क्या है, मैं इसमें कर क्या सकता हूँ। तो करने के लिए आपको यही समझना है कि अल्लाह ने जो हुक्म दिया उस हुक्म को आज वहाँ के लोग जो हुक्मरान हैं वो बदल रहे हैं। ऐसे बदलने में 2 चॉइस है, न करूँ ये करूँ। न करने को उलमा मना करते हैं कि ऐसा ना हो, न करें, करें जाएं। लेकिन जाते वक्त ध्यान रखें कि आप अगरचे उन डेट्स में जा सकते हैं तो बेस्ट। आज भी वही कहते हैं, आयतुल्लाह खुई का हुक्म यही है कि अगर आप गए, ऐसा हज करके आए जो भी आपने किया है, और आप इस्तिताअत आ गई आपकी, फिर यानी भी पैसा आप पास है, और 1 साल आपको पता चला कि डेट सेम फॉल कर रही हैं, तो दोबारा हज पे जाना पड़ेगा।
अगर आप आयतुल खुई, अच्छा आयतुल खुई के मसले में क्या है आपके, हम तो आयतुल खुई के फॉलोअर नहीं है, आपके बुजुर्ग जो अभी जिंदा हैं जिन्होंने आयतुल्लाह सिस्तानी की तकलीद आयतुल खुई से की है, उन पे ये फतवा एप्लीकेबल होगा। तो ये चीज़ ईजी नहीं है, इसमें कई सारे पेचो खम होते हैं, कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं जिनको सबको समझना होता है। थोड़ी सी चीज़ चेंज होती है, चीज़ बदल जाती है। तो बदल जाने के आप डायरेक्टली जो आयतुल्लाह सिस्तानी की तकलीद में 15 साल के बाद आया है उस पर मसला एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन मैं भी आयतुल खुई का पढ़ा, आयतुल खुई कहते हैं कि अगर आपने कर लिया ठीक है, हज करके आ गए, आपकी मजबूरी थी, आपने किसी और के एहतियात वाजिब में कर लिया, लेकिन आपको पता चला एक साल कैलेंडर ऐसा हो आया कि भाई उस साल जो है वो मैच हो रहा है और आपके पास पैसा भी है, तो कहते हैं फिर आपके ऊपर हज वापस दोबारा मुस्तती हो जाएंगे, आप दोबारा जाना पड़ेगा आपको। ये मसाइल बहरहाल इसके टेढ़े थे, मैं आपको बताया क्योंकि ये लोगों ने जो आके बात, इसलिए क्योंकि आप यहाँ ये क्लासेस क्यों होती है कि आपको प्रिपेयर करें, वहाँ जाके आपकी समझ में अचानक नहीं आएगा, कोई आपको बताएगा, आप अवेयर नहीं है, हो सकता है आपकी नीयत आप गलत कर लें। आपकी नीयत अगर आप गलत कर लेंगे, तकलीद चेंज कर लिया आपने या एक दिन के लिए तकलीद चेंज कर ली, दोनों में आपके मसले ख़राब हो जाएंगे। आपको तकलीद अपनी चेंज नहीं करनी है, आपको सिर्फ एहतियात वाजिब पे अमल करना है। कि आयतुल्लाह सिस्तानी ने मुझे इजाज़त दी है कि इस मसले में मैं किसी और आलिम को फॉलो कर लूँ, किसी और आलिम को फॉलो करने में आप सिर्फ डेट को चेंज कर रहे हैं कि 8 की जगह आपको वो 7 को ठहरा रहे हैं, 8 की जगह 7 को एहराम पहना रहे हैं, एहराम का आप पहने 7 को, तो 7 को एहराम पहने। अच्छा इसमें भी एक मसला और अच्छा है, आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़दीक पहले एहराम पहनना सही नहीं है, लेकिन बहुत से मराजे 3 दिन पहले भी एहराम पहनने को इजाज़त देते हैं। 3 डेज़ पहले भी आप अगर हज का एहराम पहन के मक्का में बैठ जाएँ तो वो कहते हैं मना नहीं, 3 दिन से पहले वो एहराम पहनने को मना करते हैं। तो वो एक मसले, लेकिन आप तो 8 ही को पहने, 8 को पहनकर आप डायरेक्टली वहाँ से चले जाएंगे, सीधे के सीधे मिना ले जाते हैं बहुत से लोग, बहुत से अरफात ले जाते हैं, अरफात जाएंगे, अरफात का वकूफ़ है, उसके वकूफ़ के आपके सारे काम आ जाएंगे। लेकिन मेन मसला ये कि जब आप हज का स्टार्ट करें, स्टार्ट करते वक्त एहतियात वाजिब में किस तरह की आपने नीयत की है और नीयत में आप कैसे किसी और को टेम्परेरी फॉलो कर कर दोबारा अपने मर्जी की तरफ आ रहे हैं, ताकि आपके हज पे और अरकान हज को जो आप सीख के गए फ़र्क न पड़े। अगर आपने तकलीद बदल ली तो आप तकलीद में किसी की हैं और फॉलो किसी और को करके आ जाएंगे, और वो तकलीद बदलना सिर्फ इस मसले की वजह से जायज़ भी नहीं होगा, पूरी आपकी तकलीद मशकूक हो जाएगी। तो बहरहाल सलवात पढ़ने एक मरतबा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी जब आपको 1 तारीख को, अच्छा 1 तारीख को जब आप सुने, 1 तारीख को जब आपको पता चल जाए कि हज की डेट ये आई है, 27 तारीख को चांद रात है, 28 तारीख को पहली तारीख है, जो हमारे कैलेंडर में भी ऐसा ही है। जब आपको ये पता चल जाए, हाँ ये जी वहाँ पहली तारीख होगी 27 को, जो आपके लिए पहली तारीख नहीं होगी। आप ये कंफ्यूज होंगे कि उसमें इसलिए इतनी मैंने डिटेल से पढ़ा नहीं, पहले जिस दिन आप एहराम पहनेंगे हज के लिए उस दिन आप नियत करेंगे, क्योंकि आप उस दिन से वहाँ से मूव करेंगे, क्योंकि पहले जितनी भी अरकान कर रहे हैं उसमें डेट इन्वॉल्व नहीं है। एहराम उम्रे तमत्तो का नहीं, 8 ज़िलहिज को जब आप जो है एहराम पहनने जाएंगे उस दिन 7 तारीख होगी वहाँ, उस दिन वहाँ पर 7 तारीख होगी, 7th होगी वहाँ पर, गारंटेड ये 7th होगी। हमारे 8 लिखी है, तो आप वो भी कंफ्यूज ना, क्योंकि आप अपना कैलेंडर खोलेंगे जाफरी का, वहाँ 8 ही लिखी होगी। मेरे कैलेंडर पे 8 ही लिखी है, आपको जैसे जो आप एहराम पहनने के लिए जाफरी कैलेंडर खोलेंगे वहाँ 8 लिखी है, लेकिन एक्चुअल में सऊदी अरब में 8 नहीं है, वहाँ 7 है। जब 7 है, हाँ आप ऑनलाइन भाई से कहेंगे, ऑनलाइन कहेंगे भाई 8 तो 8 ही, 8 तो मेरे कैलेंडर में लिखी है, लेकिन वो एक दिन हमसे पीछे होंगे, आगे नहीं होंगे, पीछे होंगे। नहीं वो तो आपको बता दिया ऐसे ही हुआ है, तो आपको सामने आया, वो तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, ये चीज़ उनकी तरफ से डिक्लेयर्ड है। अब वही तो मसला है, इससे आगे वाले मसले आपको कॉम्प्लिकेटेड इसलिए नहीं किया कि आप अगर 2 लफ्ज़ बोलूँगा तो आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ जी, सेकंड एहराम जब पहनेंगे तो आपको ये नियत करनी है कि मैं, हाँ आपको ये भी पता होना चाहिए किसने अलाउड किया है,
ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसने अलाउड किया है, उस वक्त आपके जहन में जवाब होना चाहिए। तो आयतुल्लाह खामनाई ने अलाउड किया आपको और आयतुल्लाह नासिर नकारिम शिराजी ने अलाउड किया। ये भी आपको, मैं तकलीद बदल रहा हूँ, तकलीद किसी कर रहे हैं, किसने अलाउड किया? तो अलाउड खाली अभी लिविंग लोगों में 2 लोगों ने किया है कि वो कहते हैं आप इनकी तकलीद कर सकते हैं। आगा फयाज वगैरह भी हैं मौला, एक बार सलवात पढ़ दें इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये जो आपको बताया था, ये देखिए यहाँ लगाया था मैंने, ये आपका चांद कौन सा है? ये ईद वाला चांद है। सऊदी अरब क्या करता है, ये आपको बताने के लिए, ताकि आपको यकीन हो जाए कि मसला कितना ख़राब है। सऊदी अरब ने 29 मार्च को चांद की ये कैफियत थी और सऊदी अरब ने ईद मनाई थी। आपको समझ आया डिस्कशन क्या है? रेड जोन में नहीं था, ब्लैक जोन में था। ब्लैक में सऊदी अरब ने इस साल की ईद उल फित्र इस कानून से मनाई है जी। ओके, वो आपको ओके, तो आपको वो जब नियत कराएंगे बताइए, बस सलवात पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए यहाँ पर आयतुल्लाह इसहाक फयाज ने इजाज़त दी है, आपके एहराम बांधने में इश्काल नहीं है, लेकिन वकूफ़ में इश्काल है। अगर आप किसी के मौलाना से पूछ लेंगे इंशाल्लाह, मौलाना ज़्यादा बेहतर, हर साल ले जाते हैं, मैं तो ले जाता नहीं हूँ, इसलिए वो ज़्यादा आपको, इसलिए मौलाना को दावत दी आपको बताएं। लेकिन असल में क्या है, तकलीद आप लोग जिस तरह कराते हैं, जिस तरह आप करते हैं, वो उसमें बहुत मुश्किल है। इसमें देखिए आपके जो लोग बैठे ना यहाँ पे, ये 4-5 कैटेगरी के लोग हैं, सब एक जैसे नहीं है। आप जो सब बैठे हैं मेरे सामने, ये सब इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो घंटों पढ़ के आए, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, कुछ ऐसे हैं जो जिन्होंने आपसे एक दूसरे से सुना है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने ऑडियो सुनी है पुरानी, 20 साल पुरानी। तो सबके नॉलेज का सोर्स अलग है। जब सबके नॉलेज का सोर्स अलग है तो आपकी उसी इल्म से आपका डिसीजन मेकिंग है। जब आपका डिसीजन मेकिंग उस इल्म के एतबार से, तो इसीलिए उसे क्लियर करना ज़रूरी है कि आप करेक्ट डिसीजन करने के लिए आपको अपने इल्म को एक पैराए पे, एक जगह पर मुतमरकिज़ करना पड़ेगा। आपको पता है कि ये तकलीद क्यों बदल रहे हैं, बगैर किसी रीज़न के आप तकलीद बदल नहीं सकते हैं। आपको पता हो तभी बदल रहे हैं। तो मैंने बताया कि बदलने का रीज़न है ये रीज़न ये, क्योंकि आपका हज नहीं होगा अगर आप आयतुल्लाह सिस्तानी तकलीद में हज कर आए तो नहीं होगा। तकलीद तो बदलते ही नहीं है कोई भी। हाँ, इस मसले में आप दूसरे के, हाँ, तो उसी को जो मैं तो आपको कहा ना, तो इस 90% लोग यही कहते हैं कि मैंने अपनी तकलीद बदल के हज किया है। पता नहीं जनाब आपके पास कौन से रिसोर्स से जवाब आता है, हमें नहीं पता जनाब। अच्छा, नहीं कि वो कौन से आलिम को फॉलो करते थे ये भी हमें नहीं पता। नहीं, अपनी जमाती के लोगों ने आगे हमने तकलीद बदल के हज किया। मेरे सामने तो लाओ कौन जी, बहुत से हैं, अभी आपको बता दूंगा। अभी को आके बता जाते कौन से लोग हैं। बहुत से लोग हैं, बहुत से। अब हैं, अब क्या कर सकते हैं जो। चलिए एक बार सलवात पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। दूसरे आलिम को बदनाम करते वो लोग, ये पता नहीं कौन है वो लोग, सही, जो दूसरे आलिम को बदनाम करते। कोई आलिम वहाँ ऐसा नहीं बताता जी, कि आप तकलीद चेंज करें। सब आलिम यही बता रहे कि ये पर्टिकुलर मसले के अंदर आप आका सिस्तानी की जगह पे इनको फॉलो कर रहे हैं, बस इतना ही बता रहे। मुझे, मैंने नहीं सुना कोई आलिम ने ऐसा बताया। मुझे यहाँ पे, मुझे पर्सनली, हाँ, देखिए आप किसी मसले को जब समझते हैं तो समझने के लिए कि आप क्यों, ऐसा हो सकता है कि आपको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। मैंने बताया, अगर हो सकता है किसी साल ऐसा हो कि जिसमें चेंज, तो इसीलिए आपको बताएं कि जब आप हज पे जा रहे हैं, आपको पहले से पता है कि तारीख़ बदलने वाली है, तो आप पहले से प्रिपेयर होकर जाएं। आपको पता है किसका है किसका नहीं है। कि हम जहाँ पर 2004 में गए थे, हमें खुद आयतुल्लाह सिस्तानी के ऑफिस में भेज कर मालूम करना पड़ा था कि क्या है
उन्होंने जवाब दिया था तब चेंज की थी, आज आपको पहले से पता है। मसला है कि आपको ये सारी चीज़ें बताई इसलिए ताकि आप उसको देखकर कर सकें। सलवात पढ़ने के बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी जी You said that we supposed to change the following of this masla on the 8th of Jilhaj, correct? Uh, as per one of the thing that I understood was you supposed to do it. This is the recently I saw some video or something that you supposed to do it on 9th Jilhaj in the plains of Arafat before you start your wukuf for Arafat. Is that correct? Okay, in this condition, if Allah Sistani allowed you to wear ihram before the time, then you change the Arafat. If he is not allowing you to wear the ihram before the time, then to change when you wear the ihram. Because you wear ihram day before. You are wearing the ihram day before the 8th of Zilhijjah. Yeah. So I show you, Ayatollah Fayyaz allowed to wear the ihram 3 days before. This is the fatwa right here. Which one? Ayatollah Fayyaz allowed to wear the ihram 3 days before the Arafat. Right here the fatwa of Sheikh Ayatollah Fayyaz. Sistani doesn't allow. Maulana says Sistani allowed to wear the ihram 3 days before or same day you have to wear. Wearing the ihram of Hajj Tamattu in the Makkah, when they have to wear the ihram. The wajib said it's start from 9 Dhul Hijjah if you can reach Arafah before noon. But usually because it's very difficult to reach Arafah at noon, usually the majority of the Hajjaj, they leave Mecca on 8 Dhul Hijjah. Right. Then it's allowed for all the Maraja. They said it's lawful to wear ihram in Mecca in 8 Dhul Hijjah. So they have to change the taqleed on that day or No, you don't. you have to like to follow the Anad Maraj to wear their taqleed on. You don't need to change your taqlid. No, taqleed means like you to follow the maraj. Because you're wearing ihram day before. Yeah, when they say stand, it's okay. Okay, he can go and wear ihram. There is no like exact time or exact day to wear ihram for Hajj Tamattu. Even you can do it on the 7th day Hajj. Yeah, that's it. This I brought it here. That's I brought because I did not find the Ayatollah Sistani's like the ruling on that. I found Ayatollah Sheikh Fayaz. So that's easier for you to wear the ihram earlier and that is more convenient for you. It's lawful, but it's very difficult to wear ihram at Zamit al-Hajj. Yeah, because if you wear ihram, then all the restrictions apply on you and you're hard for you to manage that. So you have to wear, when you're leaving the Makkah and going for the Arafat, you have to make your niyat. When you're making the niyat, you have to, जी? Yeah. So that everybody can Yeah. Mullah, you can come here with the chair. Yeah, Maulana. आप भी एक ले लीजिए आप नहीं, मैं सही. आप भी आगे आ जाइए ये हाँ. छोड़ दो ना पोडियम मैं आगे में बिछाया Yeah. दो आदमी आजू बाजू में होते तो Say आ जाएगी Nice. I take this one, so I can manage from here because I have these things. But they cannot see me if I stand here. They're watching me, so you can sit in. I don't need. वो स्क्रीन ही है खाली Khali screen? Oh, that's fine. Yeah, don't. يلا صلوا على محمد وآل آل محمد. محمد اللهم صل على محمد وآل محمد محمد يا You know that it's big tawfiq and success that you are going for Hajj. Because we have riwayat that Al-Hajj is invitation from Allah Azza wa Jal for you. Just imagine from 100 million, 100,000 million, Allah Azza wa Jal choose just 2 or 3 millions to visit His house. Then it's a big tawfiq for you to go there. Because you know that Allah Azza wa Jal invited the believer every year 2 times. One is general for all the believers in the month of Ramadan, and there is specific invitation for those who are going to Hajj. And you are Allah Azza wa Jal give you tawfiq for Hajj. Then it's good time to, when you are going there, to be with the first group. Because according to the riwayat, Allah Azza wa Jal word Hajjaj and He divided the Hajjaj for 3 groups. One group, as Maulana, he mentioned that in the hadith of Ahlul Bayt, the word of your Hajj, it has to be paradise, Jannah. And inshallah, you will be from the first group. If you cannot, then the less. The second group, Allah Azza wa Jal them,
their reward is to forgive all their sins. Then if it's not from the first group for Jannah, at least what? You have, inshallah, Allah Azza wa Jalla, He will reward you to forgive you all the sins that you did it in the past. The last group, those who are, their intention is not very pure and they don't did or do the Hajj exactly, Allah Azza wa Jalla reward them two things. Provide them double than what they spend in their Hajj and prolong their age. Then the benefit and the reward for Hajj is what? There's nothing in any worships like what? Hajj. For that, I'm just amazing from like some brother, they said, okay, if someone he went to Hajj one time is enough. Absolutely is not enough. As long as you are able to go to Hajj, then you have to. And for that, look at Imam al-Hasan, salamullah alayhi. Allahumma salli ala Muhammad. He made Hajj 25th time in his age. For that, some Maulana, they went 50 times. It's good, it's a success, it's tawfiq from Allah Azza wa Jalla to go to Hajj more than one time. And we have riwayah from Ahlul Bayt that salamullah alayhim said if someone he went to Hajj 3 times, Allah Azza wa Jalla never ever make him like face the poorness. That means always he will be what? Rich, and he prolong his age. I want to give you something from my experience. Some of these things, brother, you have to prepare yourself for Hajj. You are not like a normal believer. You are going to visit Allah's house. Then first of all, you have to prepare yourself for this like trip. It's a spiritual trip. One of these things, it starts from your home. From your home, your intention is what? To go to Hajj. Because if your intention is start from your home, from Atlanta, let's say, Allah Azza wa Jal reward you for each step 10 hasana, and He will forgive you 10 sins. Just imagine how many steps that like we have from Atlanta to Mecca, and how many rewards that you will get it for each steps. Then you have to start your niyyat from your home, when you leave your home. First of all, you have to start for sadaqah, you have to prepare your will, and you have to make a pure intention to do Hajj correctly. One of these things is very important, that's mean it's wajib for you to correct your pronunciation when you are reciting Surah Al-Hamd. You have to start from right now. As long as you have a chance to correct your pronunciation, then you have to. And maybe last year I gave you like an app. That's mean you can repeat Surah Al-Hamd more than one time, and even you can record it, and it shows you what the mistake that you do it when you are reciting Surah Al-Hamd. It's very good. And you have to listen to each other. Second things, you have to you have to correct your wudu. It's wajib for you from right now. Don't think that your wudu is what? Is perfect. And don't feel shy when you are perform wudu in front of Maulana or any one of you. You have to correct your wudu, because if you are make any mistake, that's mean your wudu is batil, then your salat behind the maqam Ibrahim is batil, then your tawaf is what? Batil, then your Hajj is batil. Then two things is very important to start from right now to correct it. The pronunciation of Surah Al-Hamd and your wudu. That's been very important. The other things, alhamdulillah, the majority of you, that mean usually are did it, the khums money. You have to go by the pure money. That's mean your money that you are spending for Hajj, it has to be what? From Muhammad's money. If you are not like do the khums, that's mean your Hajj is what? It's batil. This is inshallah, Maulana, he explained a lot of things for you. That's been the condition of Hajj, and inshallah, there's Maulana Nawab duty. And I want to explain something is very important according to my experience. One of these things, for those who are going at the first time, whenever they are looking for Allah's house,
Allah Azza wa Jal, He will answer them for 3 needs. This is according to my experience. At the first time, when you are look to Allah's house, ask Allah Azza wa Jal 3 needs. And you will see Allah Azza wa Jal answer you. This is for those who are going at the first time. The important things, brothers, that's mean in Hajj, you know that Hajj is a worship. And in Hajj, we have 3 kinds of Hajj. We have Hajj al-Ifrad, Hajj al-Qiran, and Hajj al-Tamattu'. Hajj al-Ifrad and Hajj al-Qiran is for those who live close to Mecca, 85 or some ulama they said 88 kilometers. For us, those who live in distance, that's mean all those like live far from Mecca, 90 kilometers and more, then the wajib for them is Hajj al-Tamattu'. Hajj al-Tamattu', it's one worship but from 2 parts. The first part is called Umrat al-Tamattu', and the second part is Hajj al-Tamattu'. And because these 2 parts, it's one worship, for that we will make Tawaf al-Nisa one time. We will not do it in Umrat al-Tamattu'. And this is the difference between Umrat al-Tamattu' and Umrah al-Mufrada. Umrah al-Mufrada, we have to make Tawaf al-Nisa after Sa'i, but in Umrah al-Tamattu' we don't need to do Tawaf al-Nisa after Umrah al-Tamattu'. And why we have to do it just one? Because it's in the same like time in Dhul Qa'dah or Dhul Hijjah. We have to do Umrah al-Tamattu', but Umrah al-Ifrad, you can do it in any time in the year. But for Umrah al-Tamattu', you cannot do it even Dhul Qa'dah or Dhul Hijjah. Hajj al-Tamattu', brother, it's wajib for those who live far from Mecca, look like us. One of the important things in Hajj, when you have to change your intention, if you are follow the marja that said ihtiyat wajib and you cannot follow him. This is one of the important mas'ala, because some masail you cannot keep your following for Sayyid Sistani. It's very difficult for you. Like what? Like as Mawlana Nawab mentioned, in Arafah. In Arafah, Sayyid Sistani, he said, if like the day of Arafah, it's different. Let's say maybe in Arabia Saudi it's 26, and according to us it's 27. In this case, what we will do? If you are keep following Sayyid Sistani, that means we cannot stand Arafah with them. If we cannot stand Arafah with them, then you have to go the next day. The next day they not allow for anyone to stay in Arafah. Then your Hajj is what? Is what? What you have to do? Then you have to change, because Sayyid Sistani, he gave you option. Either you have to follow him, if you can do Hajj, according to his opinion, for the moon, or he said you can follow another alim. But who's another alim? That's mean the ulama, they said al-a'lam fal-a'lam, the most knowledgeable alim and less. You cannot follow any alim. According to their office, I asked them if you want to follow the other marja. They said Shabir Zanjani, that's mean Iran, Sheikh al-Wahidi al-Salqum, and Sheikh Ishaq al-Fayyad in Najaf. One of those ulama you can follow. If Sayyid Sistani, if you want to change your taqleed from any mas'ala, you can follow one of them. Sayyid al-Shabir Zanjani, Musa Shabir Zanjani, especially in Arafah, the important intention in Arafah. In Arafah, when we have to start from the noon, from Dhuhr prayer till Maghrib. When we wear ihram for the Hajj, you don't need what? To change your taqleed, because you can do it at any time. But it's very difficult to wear ihram on the 7th Dhul-Hijjah. Or even 8th Dhul-Hijjah, it's very difficult, but because the Ministry of Hajj, they force the group to go on the 8th Dhul-Hijjah to Arafah. But the reality at the
early years, we are going after Fajr prayer. We'll pray Fajr prayer on the 9th of the Hijjah. We'll pray Fajr prayer in Mecca, and we'll perform like some mustahab tawaf, and we'll leave to Arafah. But in reality, they don't allow for us right now. According to their law, they force all the groups to go on the 8th Dhul Hijjah. Also for us, it's mustahab to go to Mina, to stay in Mina at the night, and then we will leave what? To Arafah. But right now it's very difficult because we cannot ride the bus in the day. Before they are just walking, and right now nobody what? Walk from Mina to Arafah. Then the best thing, what we will do, we will leave Mecca on the 8th Dhul Hijjah, as Mullah Noah mentioned. We'll go by bus close to Mecca. We perform Hajj, the niyat of Hajj al-Tamattu, and we are going what? To Arafah. We don't have anything at this night. There is nothing except some mustahab dua. The wajib things, it starts from the noon, from the midday, from Salat al-Dhuhr. And if we have a different days, then before you are perform the intention of standing of Arafah, the one who guide you, he has to mention that whoever follows Sayyid Sistani, then he need to change his like taqleed in this mas'ala, just in this specific mas'ala, standing in Arafah, to Sayyid or Sheikh Sayyid Zinjani, Shabir Zinjani, or to Sheikh Ishaq al-Fayyad, or any merja that he mentioned it. As long as you are changing your taqleed, then after that directly you have to perform what? The niyat, the intention of standing on Arafah. Aqifu Arafah from Dhuhr prayer till sun set, Hajj al-Tamattu qurbatan ila Allah ta'ala. This is the when you have to change it. Just 1 minute before what? Before Dhuhr prayer. Because at Dhuhr prayer you have to perform what? If someone he didn't change his taqleed and there is a different, then his hajj is what? Is batil. As long as you change your hajj, that's mean your intention at the 9th of Arafah, then everything it will be what? Okay with you. This is very, very important mas'ala, and the one who guide the group, he has to explain that for the Hajjaj, men and women. And this is usually what we did as our duty there when we are going to Hajj. We are going for all of like Hajjaj, we'll ask them who they are followed, if they are Sistani, and we mentioned that clearly. Then you have to change your intention right now, and we will say the intention, and the Hajjaj, they repeat their intention, and after that we will give them the intention of standing off Arafah. If you have any question. One of important masala, some of them they want Hajj for a long time, let's say 10 years, 15 years, and they don't know exactly if the first Hajj is correct or what, or not. If it's correct, then they have to do what? The second Hajj mustahab. If it's not correct, then this Hajj, it will be wajib for him. Their intention is different from the other. We called it Dasmin بالأمر الواقع المتوجه إليه, according to the real command that Allah Azza wa Jal ordered to me. And I sent the intention for Muhammad. Whoever he has like this mas'ala, he can get the intention from Muhammad. I sent it to him, how he like recite it in Arabic, but with the English alphabet, or the meaning in English. He has it. How many like a brother, they went to Hajj at the second time, but they don't know if they did the first Hajj is correctly or not? Maybe just 2. 1, and Muhammad the second, and 3. Okay, that's mean those like. No, I didn't have that issue. Somebody else had that issue, so I wanted to get that information.
Yeah, I think there is like just maybe five We make separate Hajjaj. card. Yeah, we make separate card for Yeah. you. So yeah. We For will those- type that same Yeah. niyat for you, inshallah, separate card. So you have the card holding this thing. Yeah, for We those who can are put the going for same the niyat first Maulana time. gave, you're going to print the card. For the people that are going second time and they don't know the first Hajj was accurate or not, so they can change that. Otherwise, you're all free from that. Yeah, the majority, there is a lot of people say they did their Hajj maybe Yeah, I 10, know. 15 Last years ago, but Yeah, they no. don't know No, the Hajj was right. exactly if they did it correctly or not. That's last time we discussed and we make the niyat for that. We have card for that, inshallah. Yeah. One of the important things in Arafah, brothers, you have to know, Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. The biggest Yeah. sins, Yeah. the biggest sins, great sin, when you are stand in Arafah and you are doubt that Allah Azza wa Jal forgive your sins or not. When you stand your Arafah, you have to certain 100% Allah Azza wa Jal forgive you your sin. If you are doubt, that's when you commit great sin. This is according to the riwayat of Ahlul Bayt Salamullah alayhi. Then try to use these hours, is just some hours, from noon till the sunset. Maybe less than 10 hours, maybe less than that. It's from 1 o'clock till maybe 6 or 7, that's mean less than 10 hours. Try to use it like wisely. We have a lot of dua. We have Ziyarat Imam al-Hussein, salamullah alayhi. We have dua al-Imam al-Hussein. We have dua al-Imam Zayn al-Abidin, salamullah alayhi. And the best hours, if you cannot do it directly from the noon till sunset, the best hours that you are perform dua is 1 hour before the sunset. Try to use this what? This hour. And try to leave the tent and go outside under the sky and ask Allah Azza wa Jal whatever you need. Because this is very important hour, especially in Arafah. Don't ignore it. One of the important things, brothers, this means there is a lot of common mistake that the Hajjaj made it every year. One of these things, you know, that's mean, inshallah, Mawlana now will explain that for you. When you are wearing ihram, there is 25th things, it's haram for you. And one of these things is for the man. He cannot cover what? His head. Then you have to be careful when you use the cellular phone. Either you have to make it in loudspeaker or you have like the headphone. Because if you are use the phone and you put it like this, it covers some of your head. Then that's mean you make what? Sins. For the women, it's haram for them to cover their face. When they use their cellular phone, they cover some of what? Their face. Then you have to be careful from what? When you are use your cellular phone. Either you have to have like a headphone or you have to use the loudspeaker. Yeah, another things that's very important, and usually sometimes you cannot, that's mean the Hajj minister, they command you, it's look like last year, when they request you to ride the car in the day while you are in ihram. Because sometimes they will take you, especially right now, if you take the plan, sometimes they command you to leave Mecca on Eid al-Hijjah to Mina. And then you have to stay the whole night in Mina. On Arafah, they will ask you to ride the car, the bus, to go to Arafah. For the woman, there is no problem. For the man, as long as he cannot ride another bus, then he has what? He is not commit a sin, but he has to pay kafara. The kafara is lamb. Because in the day, especially those who are following Sayyid al-Sistani, if you ride the bus at the night and they take you from Mecca to Arafah at night, then there is no problem with it. Another thing for the women, you know that's when you are leave Arafah, we are going to
Muzdalifah. And the wajib in Muzdalifah from Fajr prayer till the sunrise. But for the women and all people and those who are sick, all the maraja, they give permission to leave Arafah. That's been earlier. They can stand just for 5 or 10 minutes and they can go by bus to Mina. They're through the Jamarat al-Aqab al-Kubra and they can go to the tent. They can do it before Fajr as well? They can do it, yeah. They can do it, yeah, even at night. Right. The majority of ulama, they said it's lawful for the women, for old people, and for sick people. To do in the night. Yeah, but for the healthy man, and they cannot do. They have to stay, and they have to make their intention from Fajr prayer till the sun set. In this case, that's mean they have to walk from Muzdalifah to Mina, and I think it's maybe around 6 or 7 kilometers from Arafah to Jamara. One of these mistakes, you have to be careful when you are eat some fruit with the fragrance. That's mean the ulama, they said you cannot smell good like fragrance. Then when you eat orange or apple, you have to close your eyes. I have a question. Yeah. So if the tour operator takes all the women to Mina directly from Arafah, Mhm. directly to the Mina, so we pick their pebbles up on their niyabat from the Muzdalifah? No, you don't need, because they make intention. They have to stand for 5-10 minutes. They have to make their intention and they leave. Should they have to come to Muzdalifah? No. For the women, they are going from Arafah to Muzdalifah, stay in Arafah 5-10 minutes, even in their bus. You mean Muzdalifah? Huh? You're talking about Muzdalifah, right? Muzdalifah, yeah. But what if they don't stop at Muzdalifah and go straight to Mina? No, they have to stay at least 5-10 minutes in Muzdalifah and they have to leave to Arafah. Because it's in their way. No, I'm just trying to understand it. Because in their way, and usually it's very easy that you have to ask the driver to stop and And then they collect their own pebbles. yeah, and they can go there and They go straight to the Mina. absolutely. Yeah. Do you have any question about the Hajj? Do you know Hajj is very easy if you are follow the one who guide you. It's very difficult if you are listen to other Hajjaj. Even for those who has experience, don't listen to them. Because any mistake you are committed, they told you that your Hajj is batil. And absolutely this is not right. This is wrong, absolutely. Always, whenever you have question, go to what? To alim. That's mean for each group there is alim. Ask him, okay, this is the masala. What I have to do? He will give you the right answer. If you are listening to other Hajjaj, brother, the Hajj, it's very, very difficult from right now, I told you. But it's very easy if you are follow the one who guide you and if you are follow the one who arranged the group. Because the one who arranged the group, he knew exactly when you have to leave, let's say to Mecca, because he has good experience. For the Sharia Masail, ask the alim. For like management, as the one who managed the group. One of these masala that's mean it's very important, brothers, that you have to take care about it. When you are smell good, as long as while in ihram, if you are smell good fragrance, you have to what? Close your eyes. If bad, then you have to what? Smell it. This is, and one of like when you are where you are faced. In our way from Medina to Mecca, sometime we are stopped in some restaurant, and you know the bathroom there. The bathroom is what? The smell of bathroom, especially in the Middle East, is very bad. Then you have to not close your what? Noise. You have to what? If you cannot, then you have to do it very fast. Yeah.
Another problem that you will face it when you are enter the hotel in Mecca. They use a lot of like bukhur. Then you have to close your eyes. One of the biggest problem that you will face it to look at the mirror. And you know, when you are like, take the ascensor, the elevator, you can see your face. In this case, intentionally it's haram. If by accident, it's not haram. Yeah, that's when you have to be careful. Because usually that's when the man, he is looking for the mirror to what? To correct himself. Whenever you are faced, just look down or close your eyes to not see. Because if you are like correct yourself, you will be in trouble. Can we use the camera to take like some pictures? Yes, you can, even if you are see your face. But it's okay because it's not a mirror. Okay, I try to remember like the common mistake that the majority of the Hajjaj do it every year. But one of the biggest things to make like right or correct Hajj, it starts from right now. Correct your wudu, correct what? Your recitation, as long as you can do it. But if you cannot, it's very difficult. It's impossible. Then the ulama, they say, okay, do it whatever like you can. It's according to your ability. But you have to try to do it from right now. And another very important thing is the khums. If someone he didn't do khums, he has to start from right now to talk to Maulana or the khums committee to perform khums. Because without khums, your hajj what? No, if you never paid the khums, don't talk to me, don't talk to the khums committee, then you cannot do anything. Yeah. Talk to Maulana Fauzi because he has wakalat to forgive your due khums from past. You come to him, inshallah, and make a muamala with him because he's the only authorized person. I'm not authorized. I am authorized, but I don't use my authority. I use Maulana's authority. Khums committee cannot do anything. They have no right to give you forgiveness for your delay khums. It's only permission by the Ayatul Sistani to the valid people. And valid people are available in Atlanta, only Maulana Fauzi. So if you never paid the khums, you have to come to the Maulana, ask, I have paid the khums this much and this is my incomplete khums. I want to make like the mamla with you. Maulana going to make mamla with you. Give you permission to delay if you are unable to pay full khums. Or if you are able to pay, inshallah, he forgive your past mistakes. So all hanging ibadat going to become acceptable. So this is the right answer for that. Inshallah, if you have come to me, I can talk to Maulana, explain what is your situation is, and inshallah we can make this permission for you. The khums committee is made by Jaffari Center. They have no authority to delay anything in the khums. They have no power for that. Don't make it. Maulana is saying for respect of the Jaffari Center and the khums committee, we respect for that, but they have no power to that. This is the Sharit Masla. Yes, one of the important things that's very recommend, you have to be generous when you are going for Hajj. Don't be greedy. Let's say if you want to buy something, try to give it for Hajjaj. That's mean, let's say while you are walking and you feel thirsty, don't buy just one bottle for yourself. Just look at the Hajjaj, and instead of you are buy one bottle water to buy like for the whole Hajjaj. There's a lot of reward to be generous with your group. Don't be greedy. One of the biggest like mistake, like sometime that's been the Hajjaj face it. You know that's been while we are walking from Muzdalifah to Mina. Sometimes it's very difficult because to take the road to the first level through the Jamarat. In this case, if you are going to the first or to the second or third, and right now fourth, maybe more than that. In this case, if you cannot do it, just ask the alim, because Sayyid Sistani and the majority of the ulama, they said it's not lawful to throw jamarat from the first or second, it's just from the one, yeah.
In this case, either you have to go, because they don't allow for you to go back. Then you have to leave Mina and you have to enter Mina again to do it correctly. And some of them, it's very difficult for them to leave Mina and coming back again. In this case, you have to ask the Maulana. For that, when you are like reach Medina, take the telephone from Maulana, the number of phone of Maulana. Then whenever you will face some trouble, he will like tell you exactly what you will do. Because some ulama, they said it's lawful to throw jamarat from the first and second level. In this case, if you cannot do it correctly according to the majority of the ulama, then you can change your intention in this masala for another alim. Some of them. Then one of the important things, try to take the number of cellular phone of Maulana. Who's the Maulana that you are going with? All of you? Okay. Okay, then alhamdulillah, both of them, they have like good experience and they are Maulana. Take their number. Whenever you will face something, try to call him. Don't ask anyone. Try to call him. Inshallah, he will answer you. For the mas'a, one of the biggest mas'ala, from sa'i, from Safa to Marwa, you know, the old mas'a, it's from Mina, from Marwa to Safa to Marwa. yeah. Safa to Marwa you are close, but you went to Marwa to Safa is far. Yeah, from Safa to Marwa, it's the newest one. From Marwa to Safa is the oldest one. I would say. Then, if you are going from Marwa to Safa, you don't have problem. But when you are going from Safa to Marwa, this is big problem. How you are do it? Inshallah, they will explain to you. According to Sayyid Sistani, that's mean you have to do it to the old way. The old way, that's mean just from Marwa to Safa, and that's very difficult. You cannot do it. And you cannot do it through the way of the wheelchair. They don't allow for you. Then Sayyid Sistani, he said, when you start from Safa, you have to start from the closest way to the old road. That's when you have to be very close. Let me explain that for you. Let's say this is Safa and this is Marwa. And there's the road from Marwa to Safa, there's the newest one. And this is the oldest one. And this is from Safa to Marwa is what? The newest one. Usually this is, I think, 7 meters or more than that. Yeah, then what you will do, especially like in the beginning, because you have to start from where? From a Safa. When you make your intention, try to be very close to the what? To the old road. That's mean from that side. Try to be from what? The left. Start from the left, and when you are going, let's say, 10, 15 steps, whatever you can do it, and then you can take any like place. And when you will be close to Marwa, try to go back again. Close to the old road, and you have to be in Marwa from the what? From the old road. This is the best thing that you have to do. For that, when you are perform sa'i between Safa and Marwa, you have to think about that. From Marwa to Safa, you don't have any problem. But from what? From Safa to Marwa, when you are start, you have to be close the old road. And when you want to end, that's mean to enter the Marwa, you have to be close what? The old road. And in between, it doesn't matter. To, like for Kaaba, you know that's mean. It's better to be between Maqam and Allah's house, but it's very difficult. If it's a lot of a crowd, then you can't do it in. It's not, according to Sayyid Sani opinion, it doesn't matter. From wherever you can do it, you can do it. The prayer behind Kaaba, it doesn't matter. That's mean it has to be directly. Whenever you find room, then you have what? To pray.
one of the important things, especially for those who are going at the first, Sayyid Sistani, he said, the gap, the time between the tawaf and the 2 rak'ah prayer, maximum it has to be 10 minutes. That's mean while you are performing tawaf and when you are finished it, you have just 10 minutes to start your prayer. Go directly behind Maqam Ibrahim whenever you will find room, and you have what? To pray tawaf, ruk'atay tawaf, Umrah tamattu or Hajj tamattu or tawaf al-nisa. If you are talking, or if you are, that's mean there's a lot of a crowd that you have to be, what we will do usually, the last circle, it has to be, you can take it little bit far. Then in this case, when you are finished your tawaf, you will be very close what? To Maqam Ibrahim, and you don't need to miss a lot of time. Just maybe in 1 or 2 minutes, you can be behind the Maqam Ibrahim. Because I will saw some of Jaffari Center brother in 1 year. I don't know exactly, I don't remember that year. I asked him, he's finished his tawaf and he's looking for his group. I said, why you are looking for your group? He said, because I finished, I don't know where. Told him, okay, as long as you have finished your prayer, you have finished your tawaf, you have to go to pray. When you are finished your tawaf, he said more than 15 minutes. I said, okay, you are in trouble right now. Either you have to what? To perform tawaf again. Don't look to anyone. Whenever you are finished your tawaf, go directly what? To perform. When you are perform your tawaf, then you can wait your group. But directly you cannot wait them. Do you have any gap between salat and sa'i? Yes, you can take a rest for 1 hour, 2 hours if you feel tired. And then you have what? To perform sa'i. After sa'i, you have to make taqsir. One of the common mistake in taqsir, sometimes some brothers, they will be generous and they start with the other before they start by themselves. In this case, both of them are in trouble. You have to start with yourself and what? With the other. You have to start taqsir and then you have to make taqsir for other. The best thing that usually I will tell like the Hajjaj, if someone he said, do you need your help? I can make your taqsir. Said, okay, please give me the Caesar, I will do it by myself. Because you don't know if he did it already or not. Then the best thing, ask him for Caesar, or you take your Caesar with you and that's it. Yeah, because it's happened every year and more than one Hajjaj. Even when you are warning them, tell them, okay, you have to start with yourself. After that, some of them, they say, okay, Maulana, he did that. I said, then you have to do it again. If someone, he make like some mistakes and he through his ihram and he take like a shower and everything, and then he knew that his sa'i is what? Is not right. Or let's say he didn't do taqsir, or someone he made taqsir for him, but he didn't do that. In this case, he has to what? To wear ihram, and he has to make what? Taqsir, and then he has to wash his body again. Yeah. For that, it's very important. Either you have to take your scissor with you, or if someone, he will ask you, said, okay, give me your scissor, I will do it by myself. Or you have to ask him, did you do taqsir? If he said, yes, I did taqsir, then he can help you. If you have any questions, shall I, just to remember some common mistake that the Hajjaj did it every year. But inshallah, Mawlana Nawab, he will explain for you the steps of Hajj. You know that's when the Umrah is very easy. It starts from what? From Medina and in Miqat, Masjid al-Shajara. In Masjid al-Shajara, you have to pray 2 rak'ah prayer. Usually we are going before Maghrib prayer because we cannot ride the bus at the day. You have to ride the bus at night. Then before Maghrib prayer, we are going there and we are perform ihram.
And we said, أحرموا لعمرة التمتع, حج التمتع. For the first one, he said, قربة إلى الله تعالى. And after that, directly, he has to what? To state تلبية, لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك, لا شريك لك لبيك. When he did that, then there is 25 things it will be haram for him. Inshallah, Maulana, he will explain that for you. After we are reached Mecca, I told you the first thing when you will face the Kaaba, you have to ask Allah Azza wa Jal 3 needs, and He will answer you. This is according to my experience. I will ask all the Hajjaj, they will say Allah Azza wa Jal answer whatever we ask Him. And then you have to start with the Tawaf, and Tawaf it has to be with the Tahara. That's mean before you are going to Kaaba, you have to perform what? Wudu, and you have to keep your wudu while you are in Tawaf and for Salat. For Sa'i, you don't need what? To keep your wudu. The important things in Tawaf and Ruk'atay al-Tawaf, and then you are going to Sa'i between Safa and Marwa, and you have to make intention. After the intention, after you are finished in Marwa, you can make taqsir, and the Umrah is what? It's finished. It's just 5 things. Start from what? Ihram in Miqat Shajara, Tawaf, Umrah Tamattu', Ruk'atay, Al-Tawaf, and Sa'i, and Taqsir. That's it. For Hajj, it's 13 things. Start from Ihram in Mecca, and then stand in Arafah, from the noon to sunset, and then to Muzdalifah, from Fajr prayer to sunrise, then going to Mina to through the Jamar al-Aqaba Kubra by 7 stones, and then Hadi, that's mean to Adhiya, and then Taqsir. After Taqsir, you have like some a'mal in Mecca. One of these a'mal is Tawaf, Hajj al-Tamattu', Ruk'atay, 2 prayer for Tawaf, Hajj al-Tamattu', and then Sa'i between Safa and Marwa, and Tawaf al-Nisa, and Ruk'atay Tawaf al-Nisa. And then the first night you have to stay either for the first part of night or the second part of night or the whole night. The better is to stay what? The whole night. It starts from Maghrib prayer till Fajr prayer. But it's the wajib things, either the first part or the second part of night. At the 11th Dhul Hijjah, then you have to through the first Jamara, the second and the third Jamara. And in the 12th, also you have to through the first Jamara, second Jamara, and third Jamara by each of them by 7 stones. And you have to stay the second night, the night of the 12th. At the noon of 12th, we will finish everything. That's when we have to stay 2 nights in Mina, the 11th and the 12th, and we have to through the Jamarat in the day of 11 and day of 12. At noon, the Hajj is what? Finished. It's just few days. That means it starts from the 9th of the Hijjah. It's end on 12th the Hijjah. That's mean 9, 10, 11, 12. 12 at noon, we are finished. For Umrah Tamattu', it takes from you maybe 2 hours. It's not more than that. But you have to be in Ihram from Medina to Mecca. If you take the train, 2 hours. If you take the bus, between 6 to 7 hours. The best thing is to take what? Train. That's when you have to perform Ihram in the Miqat, and you are going back to Medina, and you take train to Mecca. But all of these things at night. For the woman, it doesn't matter. For the man, it has to be what? At night. For your Ihram, you know that's me. There is specific Ihram for the man. For the woman, in any cloth. But it's recommended to wear a white
cloth, just it's recommend. But you can use any cloth. For the men, they have specific ihram and they have to know how to wear it. Inshallah, Maulana, he will explain that for you. This is just like in general, and the intention, I think Maulana now he made card for those who are going at the first, for those who are going second, that's been recommend. For those who are going in a state of someone, other, in a state of someone. Do you have any question about the Hajj? Do you have any questions, sisters? There is some masail for the woman is different from the man. You have to know it before you are going there. It's very important, especially for the woman. And don't be like shy, because if you will be shy, maybe you will miss your Hajj. Then when you are faced any question, ask Maulana. Maulana, you mentioned about some app for the reconciling the pronounces. Yeah, inshallah, I will give it to you. Right? Yeah, better to decide for someone who knows Maulana Fauzi, me, Mehdi, or someone who knows, because if you check by apps cannot give you the right answer. He can practice, you can practice with you. Are you reading correct or not? You have to check by human being, not the apps. Apps can help you, your salat is right or not. You have to come to the either me, Maulana, or someone who knows the salat. He can check your salat and wuzu and give you, okay, your salat and wuzu is okay. Then you are comfortable to do and perform your salat. Inshallah, if you have mistakes, we can tell you these are the mistakes you have to correct. Inshallah, you can practice on that. We record and give you your own recording to and highlighted your mistakes to correct as much as possible, inshallah. Yeah, inshallah, I have time. Whoever would like to, like, One more question. go ahead. I mean, I don't use it, but some people probably would have it. Can they use can mans use the belt? Belt for the ihram. Yeah, there's no problem with it. I just don't know it. So Maulana, you stated that we can put the foam on the ears. Yes. Covering the What face. Maulana is planning on giving the earphones? Yeah, you can do it like this is the So that's good. in your ear it's good. Yeah. Because whenever you will put your cellular phone like this, that's when part of your head is what's covered. For the woman, part of her face. For the men, it's haram to cover their head. For the woman, it's haram to cover their face. Yeah. Then either you have to use the loudspeaker, or if you have like a phone inside your ear. Okay, one more thing, guys. If you, as Maulana said you about recite salawat, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. For homes thing, you know, when I was start paying homes since long time, and when I just working for Jaffari Center, and paying homes is very easy. When I started business, I faced lots of trouble, because we cannot calculate accurate homes when you have business and you have like the share market and something like that. It's very hard to pay accurate homes. So in this case, highly recommended by Maulana. If you heard the Maulana came from like Sadiq Hassan, he told is for safer side, and that's Ayatollah Sistani said, at least you pay the homes of your total money you are spending for the Hajj. Is more safer. But have one clue, if your wives are making their own money, they are paying their own homes, they have to pay. If they are not capable, you are giving as a gift, then this is another case. You gave them gift, and they receive right now, they have no debts of the homes, they are okay with that, they can go with this money. But if they are going with their own money and they have responsibility for their own homes, they have to pay it too. So it's more safer side. But I know most of the people, very hard to calculate and exactly pay the homes unless you are paying some extra money. This is the issue I face after we started business. I say it's very hard. We pay extra, but still you cannot take out some money sometime. Its calculation is because everything you have in your store, which you use and decrease, is homes payable. Even your milk you have there. This issue is very difficult. So for safer side, you have to separate. When you're paying 15,000 for going there, pay homes on that money, and they are more safer, inshallah, for that. If you are capable. If not, if hard your capability, then other matter, inshallah. If your question, Maulana is here, you can ask question, inshallah. Yeah, very important thing is that you have to start from right now to booking, like to visit Rawda.
because they don't allow for you to go to Rawda. You know the Rawda. Medina. That's mean the hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. Especially for those who are going at the first. You have to start from right now, look at the nusuk and go there and try to book like your time and when. Exactly. There is some specific time for the woman and some specific time for men. You have to, from right now. If you are going there, they don't allow for you to go. Who had a question? You guys had a question, right? Yeah, I had a question. So you mentioned about Surah Hamd, and you know that most of us are Gujarati, and so you know our pronunciation are very different than the Arabic pronunciation of Surah. So what do you recommend is the best way for us to learn the proper way to recite Surah? That's been the best thing that you have. Do you know that's been how you are correct your pronunciation is by practicing it. It's not difficult. Just like recite it at least 10, 20 times in a day. Then with the time, you will correct your pronunciation. Sayyid Sistani said, as long as you have time to correct your pronunciation, to recite Surah Al-Hamd, then it's wajib. It's wajib. It's obligatory to you to start from right now. But especially for old people, that's mean even if they make a practice and they try, but it's very difficult for them, they said, okay, then he can do it as much as he can. Take niyaba. But yeah, but for us, alhamdulillah, as long as we have time, you can practice it. It's not very difficult. If someone he need to check how to recite Surah Al-Hamd, inshallah, right now we are three, Maulana, myself, and Mehdi. He can listen to you, and you can check if someone his pronunciation is correct. You can check the other brothers for their wudu and for their pronunciation. The same thing with the woman. It's not very difficult. It's very easy. Okay, go ahead. Can you just explain the necessities of women's ihram? Just go through it so we all understand it. Like what are the conditions, like making sure the socks are on and the hands are. For the woman? Yes. Any kind of cloth, it doesn't matter for them. Even your cloth, that's mean, but it has to be tahir, it has to be mubah, that's mean from pure money. It's not from non-khums money that we are bought it. And that's it. It has to be tahir and mubah. How much she has to cover? Huh? How much she has to cover? What part she has to cover? How much she has to cover herself? Which things is covered, which things she can leave it open? That's mean. That's it. Yeah, it's very, very important question, especially for the woman. When you wear hijab, don't make your hijab, it has to be from hair. Don't cover your face, that's mean like this. Yeah, from your hair to her, to your chin. You cannot cover, because you know that's mean some women, they put their hijabs like this, close to their eyes. That's not lawful. And some of them, they put their hijabs close to their mouth, and that's not wajib. That's mean as you did right now, this is the wajib. But it has to be cover your hair. How are the socks? They have to And for haid, they cannot cover their haid. They cannot wear glove or something for the woman. For the feet, that's when you can wear it. So Maulana, most of our chadars, they always overlap. They're longer. If my chadar is up to my knees, my hands are inside my. Yes, yeah, right, yeah, whatever right now is good. So it's okay even if. Yeah, but you cannot wear glove. Yeah. keeping inside. Yeah. Socks. For the men, that's mean you have to wear. You cannot wear what? Shoes. You cannot wear socks. That's mean it's not lawful. صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. There's two important مسألة. I remember it. One for women, and one for both of them. For women, they cannot cover their face
For that, you know, that's been especially like in Saudi Arabia with a lot of like cars, a lot of like bad smells. Can like someone wear mask or not? For the men, yes, because it's not haram to cover their face. For women, no, it's haram to cover their face unless if she don't like wear the mask, it will make her like her health it will be worse. In this case, the ulama said, according to that, in this case, that's mean the woman, she can wear it, but as long as she doesn't have any problem with her health, then she cannot wear it. For both of them, they cannot use the cream for their hand or for any, unless if it's a medicine. Like some of them, they are like sick and they have to use it. In this case, as long as you are needed, you can use it, but as long as you don't need it, then it's haram to what? To use the cream. These two important messages. For the class, that's mean you can do it if you need it. For the rings, that's mean jewelry. If the man and woman, usually they wear it like aqiq ring. Even for the woman, it's lawful. But it's for zina, then it's not lawful. Then they have to be careful for men and women if they use it for what? Zina, or if they are usually use it. If they are usually use it, then there is no problem with it. Do you have any question? You want to borrow for some? Yeah, like a friend or a cousin or something. Let's say they give you their purse. Can you use that purse while you're in the state of ihram? If they have permission. If they gave you permission, you can use it. If not, Borrow. So I have to use it and return it. Yeah, as Yeah, long as as long as you have you are permission, yeah. borrowed, that's it's okay. fine, permissible, yeah, no problem. Because you have permission to use, it's become mubah for you. Like I prayed your home, you gave me permission, my salat is mubah. As long as they give you permission, it's no issue. As long as she's borrowed, I said Yeah, yes, yes, there is no problem. No with problem. it. Unless you know this, she got from something which is unlawful. Can women use umbrella for walking in the sun? For women, there is no problem. For men, it's not lawful. There's one more question. If we are sleeping in the state of ihram, can we cover our face? There is no problem. No. For both of them, for men and women. Yeah, for men and women, as long as they want to sleep, can they use like something to cover themselves? Yeah, it's okay. Even like for feet, it's haram to cover it, but when you are asleep, especially in the tent and it's very cold, can you cover your feet? Yes. Well, one thing from first jilkat, as you mentioned, you recommended, what is it, not to cut man's beard hair and the head hair. Is it what? Is it like a both of it? Beard and It's for the men, it's recommended to not cut your hair from the first of the Qa'dah. To keep your hair till the 10th of the Hajj, inshallah, you can like shave it. It's recommended. It's not wajib. It's strong recommend to keep your hair As long as possible. and don't cut it before the first of the Qa'dah. Inshallah, first of the Qa'dah, inshallah, when? Tomorrow. Tomorrow? Tuesday. Yeah, from tomorrow Tuesday. or from Not Tuesday. Tuesday. If you want to cut According your to hair, the you have just today or tomorrow. For the men. It's better, that's mean for both men and women to clean themselves before they are going what? To Hajj. It's recommended. Especially if you are in Medina, if you are spend 2 or 3 days, before you are like
wear ihram, you have to clean yourselves. It's strong recommend. And there is, that's me, there is some I recommend intention. You can do it while you are wash your body, while you are wear your ihram. But the wajib, it will be in the Masjid al-Shajara, in the miqat. This is wajib when you start the intention of ihram. Let's say, أحرموا لعمرة التمتع, then this is niyyah is wajib. But it's mustahab to make intention while you are like wash your body, while you are what? Wear your ihram. And it's better for both of you to use the bathroom in the hotel instead of you are going to wash your body in the miqat. Because in miqat, brother, there is a lot of people. And that's mean this like bathroom is not what? Very well. Why you are going there? As long as you can wash your body in the hotel and you are clean yourself and you can wear ihram, and then when you are going to the miqat, if you are that's mean the wash, it's enough for you instead of you are perform wudu. As long as you are keep it, then you can what? Perform 2 rak'ah prayer and pray Maghrib and Isha, and you can start your niyyat for Umrah Tamattu. If you cannot, you can just perform wudu and that's it. If you cannot keep your taharat. Even for the women, it's very important to wash their body and to wear their ihram in the hotel, because you can use to dry your hair, because it's very difficult to dry your hair in the miqat. For that, all the hajjaj, especially the women, will ask them to wash their body and to wear ihram in the hotel instead of miqat. For the men, some of them, they said, okay, I would like, because it's recommend, then we'll give them option. But for women, it's better for them to do it in the hotel. Sunglasses, are they allowed? Sunglasses. The glasses, yeah, as long as you need it. As long as you need it. No, this is not for the woman, it's not. So another question then. Some people have those glasses that tint when they're outside in the sun. They're the prescription glasses. But As long as they need it for their health, it's okay. But as long as they don't need it, then it's not love. Because a lot of people, they are just for adornment, or they said, Sunlight. huh? For the glasses that he needed, it's okay. Sunglasses. But for the glasses Black that he don't sunglasses need it, covering no. eyes. Because it's adornment, zina. Then it's not lawful. How about the sunlight? They're saying is like, I have a prescription glasses like this one. It's become Yeah, dark. that's been, Yeah, I read, right? But then when it goes to the sun, it gets darker. yeah, that's okay. That's, And that's yeah. Because you need it. One of the Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. We have one of the important things said, La jidala wala fusuqa fil Hajj. Hajj. That's mean one of the important masala. A lot of brothers, when you ask them, usually they said, Wallahi. Yeah, when you ask him, okay, do you know that? Say, Wallahi, I don't know. Yeah, or when they start talk, he say, okay, he tried to explain that, mashallah, I did these things, and he proud by himself that he did a lot of good things, and both of them is what? It's not lawful. As long as you are in ihram, try to remember Allah Azza wa Jal, instead of you are talking about yourself, because this is things, it's not right. Sometime the ulama, they said, when someone he want to talk about his background, about his family, or about what he did for himself, if he want to encourage the other people to do something, they said that's okay. But if he want to make others down, then he make a big mistake. Then you have to be careful.
don't say anything about your background or your family or what you did in your life. Just keep it between you and Allah Azza wa Jal. Try to make others remind their Allah Azza wa Jal. Try to talk about something it's benefit them. And another thing, don't say wallahi, because especially our culture, especially Iraqi brother, Arab culture, whatever you will ask them, he said wallahi. This is not, they said it's recommended to not do it because it's not a right qasam. The right qasam when someone said wallahi or billahi or tallahi. But he said wallah, that's when it's not a right qasam. But even in Hajj, they said even these things, don't say it. When you, especially while you are in ihram, don't kill any, you have to be careful. Okay, do you have any question? Inshallah, right now we'll give you just general information. Maulana, inshallah, he'll explain the steps of Umrah and Hajj, exactly what you will do, inshallah. So for us, it's not, we cannot cover our face, but when we're doing wuzu, we are moving our hands. Yeah, that's mean. This is what I said. You cannot cover your face from where you are doing wudu. That's mean the wudu, it starts from this side, from this top. That's mean between the hair and your head until this. You cannot cover it. And the same thing with the wide. This. But what they're asking is so while you do the wuzu, you're basically covering your hand, so it's fine, right? That's what she's asking. So while you do the wuzu, you're gonna cover your face. No, that's okay. There is no problem with it. Yeah, that's no problem. But what you don't, you are remembered by some a common mistake that all Hajjaj do it for both of them. You cannot use the towel or the issues. Yeah, that's when by your hand it's okay, but by another things it's not lawful. For the men, they can use the towel for their face because it's not haram. But for their hair, they cannot. Then you have to be careful. Yeah, sometimes, especially a lot of Hajjaj, when they perform their wudu, what they will do, they took their qamis and they put it over their hair, over their head. And it's a big mistake. Yeah, do you have any question? Because some questions reminded me about the common mistake. Like this question is a very important question. If someone has a flu also, that's when he cannot, as long as he needs to use the tissue, he can use it. As long as he cannot, he does not need it, then he cannot use it, especially for the woman. Any question? Yeah. Okay. We can do If someone he would like to check his next. recitation or his wudu, we are ready right now. We do inshallah Inshallah. steps and other like the whole PowerPoint. Inshallah, next time when you come here on your program is there, we can set up time and do on that day because we already like the 2.5 hour classes. You don't have any understanding available for you to understand that thing. Your brain is, your memory card is full. So inshallah, we'll do next time. Both of you, Maulana, we kindly invite you all to come for this coming Saturday. We have a Hajj dinner. Hajj dinner, yeah. Inshallah. Inshallah. Entire group, yeah. Inshallah. Inshallah. Okay, inshallah, recite Surah Fatah for all the Marhumin, especially the people who are going Hajj and Maulana's brother and his father and also family members. Inshallah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alameen, ar-Rahman ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ahdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, غير المغضوب عليهم ولا الضالين. على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
में सेव किया है अगर if it is good file then I can send it ठीक है yeah a lot of people did not came so I think they may